discuss today a very important subject, the state of universities and the crisis in graduate education in Pakistan, which is a very important subject to discuss. हमारे पास unfortunately बहुत बड़ा मसला है ये इसी का क्या कहते हैं education का. Let me just give you a brief synopsis of that. If I can figure out how to share the screen. Where am I? अच्छा जी. अच्छा जी, the oh God. अच्छा जी, जो हमें सिचुएशन नजर आ रही है वो ये है जी कि let me go back. इस वक्त ये जो सिचुएशन है वो ये है कि हमारी लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन जो है उसमें औरतें तो खैर बहुत कम पार्टिसिपेट कर रही हैं, मर्द ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं. बट द की इशू इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो हुकूमत रिपोर्ट कर रही है 6.9%, मेल 5.9, फीमेल 10, और अर्बन रूरल का आप डिवाइड देख सकते हैं. बट द क्रूशियल इशू दैट वी सी इज एज स्पेसिफिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स के यूथ all the way till 35 the unemployment rates are very high. And what I've noticed in universities is that the average age in universities is very high. People who are unemployed and basically cannot be employed are turning to MPhils and PhDs. So, जो late education है, basically all that is leading to is low quality education, and universities are becoming parking places for unemployed. Correct me if I'm wrong, but this is what the data is showing, कि youth unemployment बहुत heavy है. Number 2, जो graduates हैं, young graduates, those up to 29 years, उनमें unemployment rate you can see is extremely high. You can see that 31% of the graduates, of your graduates, our graduates, are unemployed. As vice chancellors, I think you should be seriously concerned about it. मर्दों में भी 20% है, और sorry, मर्दों में it's lower, but it's 15%. औरतों में it's almost 60%, 51%. ठीक है जी. So the unemployment rates are alarming, as is the youth unemployment rate. So I think we should think about it. Acha ji, now let's go a little further. And if you go down a little bit, I want to give you the key things, not everything. अब ये अगर हम देखें, this is one thing I want to show you. And this is all data from the PBS. ये हमने data नहीं बनाया, ना हमने survey किया. This is all data from the Pakistan Bureau of Statistics, the PSLM survey, जिसको हम कहते हैं graduate premium. That means that your education is leading to something. अगर आप देखिए degree holders जो हैं, only 50% are making more than the high school educated people, and the high school people only 20% are making more than the low education people. ठीक है. And the people, the graduates की salaries देखें कहाँ जा रही है, 62 से 100,000. They're not a lot. Average is 62,000. So here again is the failure of the education system. Why are we making people go through higher education if they're going to get paid very little? And I think this is the question that all of you should answer. Discouraged youth is another interesting issue. 15 to 29 के जो बच्चे हैं, वो majority, a large number of them are discouraged. देखिए जी, 33% of the kids are neither in school nor employed. ठीक है? And a large number of girls. And this is across both sectors, urban and rural. तो मेरा ये कहने का मतलब है, and this is some research that we did at the PIDE, and we published this paper recently. I would urge you to look at it. कि this is a huge issue for us. कि अगर हमारी हालत ये है कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं सक रहे, समझ नहीं सक रहे, तो we really have to, sorry, नौकरी अच्छी नहीं मिल रही, तो what do we say to the youth? And how do our universities justify themselves? ऊपर से the government wants to build more and more universities. ठीक है जी? The government wants to build more and more universities. So I urge you people to reflect on the state of our higher education.
which is producing a large number of unemployed people and which is forcing kids to stay in university for a long time and not do any productive work, I would urge you people, and that's why I was so keen on the WhatsApp group, we should talk about this. This is not something we should put under the rug. And this desire on the part of the government, सुना पंजाब में 12 नई यूनिवर्सिटीज प्लान हो रही है. हाँ, एक और चीज आपको बता दूं, हमने रिसेंटली रिसर्च की थी, हमने किताब भी इस पे एक लिखी थी अभी यूनिवर्सिटी रिसर्च पे. आपकी यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च हो रही है, हमारी यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रही है, दैट इज रियली रियली वेरी बैड. रियली खासतौर पर सोशल साइंसेज में सब देख चुका हूँ, यूनिवर्सिटी किताब पढ़ाना, जो सोशल साइंस में सब स्टडी कर चुका हूँ. The research is not worth talking about, and I think we should talk about it. It's really terrible research. उसके साथ जो आपकी बाकी रिसर्च भी है, वो भी दुनिया कह रही है कि बहुत खराब है. So what are we doing? नंबर 2, जो हमने एक और चीज की है रिसेंटली, कि आपकी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है ही नहीं, प्रोफेसर्स बहुत कम है, and you are winging it on junior people or adjunct faculty. जो रेगुलर प्रोफेसर्स की फैकल्टी है वो बहुत कम है. Now, that is a national emergency as far as I'm concerned. All the departments in the world, and I've seen many, each department has 20 to 30 researchers. Sorry, full professors, 20 to 30 full professors. यहाँ हमारी universities में मेरा ख्याल 10-15 full professors भी नहीं है. And this is by Pakistani definition, not by international definitions. So I'll stop here. This is the crisis that we have. And I would urge you people to comment on it. So we got a great panel. Some people have dropped out, quite sadly, because के Prime Minister House में कोई ceremonial function हो रही है, रहमतुल्लाह अलमीन, लोग उधर जा रहे हैं. We are not discussing universities, which is sad. I would urge you to consider that too. So we've got Begum Shanaz Wazir Ali here, President of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. Then got Rukhsana Kausar, Dr. Rukhsana Kausar, Vice Chancellor, Government College University. Then we got Professor Fateh Muhammad Mari, Sindh Agriculture University. Mukhtar Saab, I think, is gone. If anybody else wants to join in, please feel free to join in. This is your conversation. I just want to listen. I've raised my questions. Thank you very much. Can I turn to Begum Shanaz Wazir Ali? Thank you very much, Dr. Nadeem Haq, and all the colleagues who are joining this panel, as well as many colleagues, I'm sure, who will be participating later. There are several very major issues concerning the higher education sector. And this, I think, the discussion today about what is the product that our universities are putting out, and is that a justification for the way universities are today? And clearly, I think a lot of debate and a lot of concern expressed over the last several years, in particular, I think over the last 2 years, because of COVID, we've all been connected virtually, and I think the conversations between the vice chancellors and many other academicians have multiplied, because we've all really found this a good opportunity to connect. So the debate around education, whether you talk about school education, college or university, really fundamentally ends up with quality versus quantity as one of the major lenses that we apply to this discussion. We are very concerned about quality and what we're producing in universities, and I'll come to that in a minute, and hope to join the conversation later, again on it. But look at the school sector. हम कई दिहाइयों से ये बात करते रहे कि access to schooling होनी चाहिए, right? Education for all, EFA, Universal Primary Education, UPE, build the schools, enroll, register and recruit thousands and tens of thousands of teachers, and not looked at the fact that what is it is going on in the classroom, what is the quality of the teacher, quality of material, instruction, pedagogy. तो primary schools में dropout rate इतना जो high है, attrition rate अभी भी है. Class 2 में सबसे highest होता है, फिर 4 में, फिर 5, and then in the 6 to 10, the dropout rate reduces. Why do they drop out? Because of quality. Schools are not giving them what they think is of value. Teacher नहीं है, किताबें नहीं है, textbook नहीं है, quality of instruction नहीं है. Learning outcomes बहुत ही poor हैं compared to
any other country. So there's a crisis of quality in the schooling. 23 million children are out of school. और ये जो crisis है, ये multiply होता होता आपको universities में जाके hit करता है. Because the students who are entering the university system are also not well prepared at the schooling level. बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने 12th class के बाद clear cut और बड़ी attractive options दी हैं बच्चों को कि वो vocational technical में चले जाएं. हर बच्चे ने कॉलेज नहीं जाना होता, हर बच्चे ने साइंस स्ट्रीम में नहीं आना होता. So fundamentally there is a need for really complete sector-wide reform, and I know today's conversation is restricted to the university level, but I think there are a lot of instances and examples and relevant applications of what is happening in the schooling sector which apply to the university sector. So universities हम इस तरह सोचते हैं कि जिस तरह स्कूलों को हमने the fundamental right to education है, हर घर, हर गांव में, हर गोठ में, हर किली में और हर जिले में स्कूल होने चाहिए. That is the argument applied, and I am very sad to say that often this argument really comes from the political leaders, because they see a university not in terms of what a higher level academic institution of research and teaching should do, but they see a university as an additional big institution in their district. Like they have 500 schools, they want X number of hospitals, they also want large number of universities. So this multiplication factor every year in the budgets, every government has done it. Planning Commission chiefs have also allowed it. Chief ministers have supported it. People keep on asking for more and more universities, and that's how we establish universities. Just because it seems to be the right thing to do, that in every district to provide a university, and we all know that. कि ना professors हैं, ना आपके पास वो academicians हैं, कहाँ से आएंगे लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए जब आपके पास स्कूलों में पढ़ाने के लिए लोग नहीं हैं. दूर दराज इलाकों को तो छोड़ दीजिए, even peripheries of various cities don't have adequate schools. So Pakistan is caught in a very serious education crisis. Now, I fully take the point, and I think this is something that we are all acutely aware of, about unemployed graduates. Over the last couple of years, because of the economic crisis, there are more unemployed graduates, and also because the large-scale manufacturing sector, trade, industrial skills, service sector, etc., is not producing the number of jobs that are required to employ them. The question is not only are they unemployed, लेकिन वो unemployable है. हम उनको employment की skills ही नहीं देते उस तरह जिस तरह marketplace जाती है. So discussion हमारी जो है ये basically देखने की जरूरत है कि क्या university की relevance और connectivity to the job market, to what is happening in the marketplace, क्या वो है कि नहीं है. Universities, to my mind, are not structured to be relevant. They are structured along the traditional patterns of a chair of department, academic council, research committees, doctoral committees, or chairs of departments, academic side पे सब कुछ है, course outlines, regulation, accreditation councils. Which unit of a university has got that importance, like a syndicate or a senate, or the departmental unit where it says, is my department relevant to the marketplace? बहुत कम universities हैं. ये responsibility किसके पास है university में देखने के लिए कि management science courses में जो हम पढ़ा रहे हैं, क्या वो business sector को वो skills चाहिए कि नहीं? ये किस forum पे discussion होती है मुझे पता है. होती नहीं है. I am in a university and I also feel this. I talk about examination पे time होता है, academic council में time लगता है, दूसरी 5 committees हैं उसमें time लगता है, बहुत सारी हम meetings करते हैं. शायद हम एक आध या 2 meetings साल में करते हैं to look at the relevance indicator. What is happening in the world out there, especially technology का कितना influence है, और क्या हमने अपने courses को techno smart बनाया है कि नहीं, क्या हम इन बच्चों को वो skills दे रहे हैं कि नहीं. So structural issues हैं, institutional issues हैं, relevance के हैं, और ये
कि the right to education at the university level का एक बहुत fundamental issue. Everybody does not have a right to go to the university. They have a right to schooling, they have a right to skilling, but not every student has a right to go to a university. And the state should not be obligated कि हर जिले में हर तहसील में जाके यूनिवर्सिटी बनाए ताकि हर बच्चा यूनिवर्सिटी में जाए और फिर useless डिग्री लेकर निकले. So I think there is a long discussion and a longer debate around this. और एक unemployability और unemployment का indicator क्यों नहीं डाला जाता जब grants दी जाती हैं, जब government allocation देती है universities को? Where are those indicators? What do we look at? Just because the university has 500 people on their staff, on their payroll, या 800 people, तो उनको हर साल सालाना इस तरह की grants देनी चाहिए? या वो university produce क्या कर रही है? Output के indicators जो हैं, वो तो grant allocations या budgetary allocations के वक्त पे नहीं देखे जाते. Thank you. मैडम ये जरा छोटी सी बात बता दें कि how many professors do you have in your university? Are you asking me? Yeah. We have, I think, 30, not even 30 now, 28 or 29. And how many departments? We have 8 departments. So think about it, you have 6 professors per department. In every department, we have several programs, you know, so हमारे professors by program हैं. मगर वो भी sufficient नहीं. ठीक. अच्छा जी, let's go to Rukhsana Kausar. Madam Rukhsana Kausar. Rukhsana Bibi, can you please tell us, ये शहनाज बीबी ने बड़ी बातें की, बड़ी अच्छी बातें की, but I think quite frankly schools ये कहते हैं भाई हमें quality graduates नहीं मिलते. मैं भी देखता हूँ, मैंने जनाब 1000 students को कम से कम इंटरव्यू किया, PhDs को, and honestly I wouldn't even employ them as chaprasis. So please tell me, Rukhsana Bibi, what is the problem? Are you worried or are you not worried? Dr. Nadeem, first of all, I would like to thank you for organizing this webinar, and it's very important. Lekin I've been hearing to so many people at different platforms. Madam se bhi baat sun rahi thi, and it's really very heartening. It's always very heartening to listen to her. I am a Vice Chancellor of a women university. एंड आपको पता है कि जो विमेन यूनिवर्सिटी है उसमें तो जो विमेन का आपको पता ही है कि जो पेरेंट्स हैं पर्टिकुलरली हमारे इस ऐसे एरियाज में जहां हम बैठे हुए हैं या जनरली स्पीकिंग आउट ऑफ बिग सिटीज दे आर नॉट सेंडिंग डॉटर्स टू स्टडी टू ऑफ कोर्स टू गेट एम्प्लॉयमेंट, दे आर सेंडिंग देम जस्ट टू गेट डिग्री टू गेट मैरिड. आपको मेडिकल का भी ये इशू नजर आता है और यूनिवर्सिटीज में जनरली भी आता है. लेकिन आई एम सिटिंग इन एन इंडस्ट्रियल सिटी. देखिए हम यूनिवर्सिटीज को तो बहुत ज्यादा कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज इंडस्ट्री से लिंकेज नहीं करती, उनके मुताबिक डिग्रीज नहीं देती. हमें सबसे पहले रोल डिफाइन करना पड़ेगा कि देयर आर यूनिवर्सिटीज व्हिच आर स्किल्ड यूनिवर्सिटीज एंड दे आर प्रोड्यूसिंग मैन पावर फॉर देम. अगर मैं अपनी इधर सियालकोट में पर्टिकुलरली इंडस्ट्री के साथ लिंकेज करती हूँ तो उनके दिमाग में ये होता है कि हम जो एम्प्लॉय करें छोटी छोटी मैनुअल स्किल्स के लोग या अदरवाइज, they are not willing to take our graduate as an executives, despite the fact that they may be very good at doing it. क्योंकि students के अंदर potential होता है, उनको हम train भी करते हैं, साइंस के अंदर उनकी ट्रेनिंग होती है. अभी हमारा पिछले दिनों साइंस फेयर हो रहा था. मैं ये नहीं कह रही कि हम बहुत अच्छे हैं, but we have to also make a mindset of the community and receptivity in the industry to take those graduates at a level which they actually fit in. For example, एक यहाँ पे बहुत बड़ी tanneries industry है. We have environmental science department. We have different departments which can offer them solution. But when we did a survey कि जी इनकी जो tanneries का जो निकलता है पानी wastage निकलता है कितना hazardous है, they would not be receptive. They would not be able to listen to us. Rather, they would try कि हमारी यूनिवर्सिटी जरा दूर ही रहे. So एक तो ये practical realistic issues हमें पाकिस्तान में है. हम सारे मुल्क से बाहर से यूके से ग्रेजुएट हुए हैं. आई नो दैट माय प्रोफेसर हैड अ ह्यूज ग्रांट फ्रॉम मे बी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट एंड ही वाज प्रोड्यूसिंग पीएचडीज अंडर दैट ग्रांट. क्या हम यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसी कोई रिसर्च ग्रांट की प्रोविजन है? स्वाय ये कि हम एनआरपीयू की तरफ देख लें. अभी आपकी मैं ये भी बात सुन रही थी कि हमारी जो रिसर्च है वो बड़ी सब स्टैंडर्ड है. सर सोशल साइंसेस को तो कोई समझता ही नहीं है कि इनको यूनिवर्सिटीज का हिस्सा होना चाहिए. हम तो समझते हैं कि इंजीनियरिंग, मेडिसिन
और ये प्रोफेशनल डिग्रीज जो है, इनके अलावा सोशल साइंसेज की एग्जिस्टेंस हमें यूनिवर्सिटीज में चाहिए ही नहीं। सोसाइटी के अंदर क्या वैल्यूज इनकलकेट करने के लिए, करैक्टर बिल्डिंग के लिए, सोसाइटीज को चलाने के लिए ये सारी सोशल साइंसेज की जरूरत है। अभी आपने ये जो प्रोफाइल पेश किया है, ये बड़ा actually important है, but at the same time I tell you that I did a research like few years back. Punjab University was apprehensive that why the girls are excelling in they're getting all the good grades, even in all the degrees, medals are going to women. Vice Chancellor said कि आप एक PhD एक research करके दें मुझे, and I said why should I do a research against women and they are excelling and why you are worried about it? Honestly speaking, I took a data from board and I then saw the turning point. और लड़के जो हैं वो FFSC में ग्राफ ऐसे नीचे आया और उन्होंने हमने assume ये किया कि most probably they are going in professional degrees, that's why the graph is down and they are not coming in general education. But that is not the case, is not such. अभी भी आप देखें तो साइंस की क्लासेस में लड़कियां आगे जा रही हैं. There are so many social issues which we have to address. आज जो लड़की हम ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या सोसाइटी रेडी है कि वो लड़की जो है एग्जेक्टिव पोजीशन पे आए? ग्लास सीलिंग इफेक्ट होता है आपकी आप हमारे यहाँ सर, मैं आप प्रोफेसर्स की पूछ रहे थे, मैं थोड़ा सा जंप उधर कर रही हूँ ताकि वी फोकस टू द पॉइंट. आई एम सिटिंग द ओनली प्रोफेसर इन दिस यूनिवर्सिटी, बीइंग वाइस चांसलर, right? I'm the only professor in the university. We have 5 associate professors and we have rest assistant professor. And अभी हमारी यूनिवर्सिटी के statutes approve हुए हैं और अभी हमने हायरिंग शुरू की है. But tell you the truth, it's very very difficult to have people, because even people after joining इतनी हमने यूनिवर्सिटीज बना दी हैं. एक नारोवाल में यूनिवर्सिटी है, एक सियालकोट में यूनिवर्सिटी है, एक थोड़े से डिस्टेंस पे एक और यूनिवर्सिटी है. People get recruitment here and उसके बाद जब उनकी नारोवाल में घर के करीब एक और यूनिवर्सिटी में जॉब हो जाती है, छोड़ के उधर चल पड़ते हैं. तो रिटेनरशिप एन इशू. टीचर्स की ट्रेनिंग आप देखें कि सबसे ज्यादा बेस्ट पेड एडवांस्ड कंट्रीज के अंदर प्राइमरी टीचर्स हैं, बिकॉज दे आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग ऑन दोज टीचर्स. एंड दे मैं मैडम शहनाज की पॉइंट से 100% एग्री करती हूँ. You cannot have a 180 degree change when somebody switch on and off. नहीं है कि हम बिल्कुल बदल दें when somebody comes in higher education. उनकी इतनी कंडीशनिंग हुई होती है, रोट लर्निंग में, मेमोरी में हुई होती है. उनकी जो भी फाउंडेशन आप बना देते हैं वो एकदम से आप उनमें ना रिसर्च इनकलकेट कर सकते हैं, ना उनमें क्रिएटिविटी का इंजेक्शन लगा सकते हैं, ना उनको कह सकते हैं कि जी आप यू हैव स्टूडेंट बेस्ड टीचिंग और उनकी जो पेडागोजिकल स्किल्स हैं उनको हम ट्रांसफॉर्म करें. तो ये एक हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग और उसके बाद आगे आना पड़ेगा. लेकिन सर छोटी छोटी ये हम जो कहते हैं ना कि उनमें स्किल्स नहीं है, स्टूडेंट्स हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल्स. अब मेरा अपना ख्याल है कि वी शुड फोकस के एप्टीट्यूड की बेस के ऊपर पहले एप्टीट्यूड असेस करके उनको प्लेस किया जाए और उस एप्टीट्यूड की बेसिस में उस ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज किया जाए. अभी हम इस पे फोकस नहीं कर रहे. अगर माँ बाप चाहते हैं डॉक्टर बनाना तो वो डॉक्टर बना रहे हैं, अगर वो इंजीनियर बनाना, हमें ये बहुत सी चीजें एक वक्त में करनी पड़ेगी. लेकिन मैं ऑनेस्टली मेरा अपना ख्याल है कि अभी एक तो कोविड ने भी बहुत बड़ा हमें चैलेंज दिया कि अभी हमें देखना रिविजिट करना पड़ेगा कि हम किस तरह से ये जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हमारे पास एक चैलेंजेस हैं. नंबर 2, इंडस्ट्री हमारे से रिक्वायर क्या करती है और कम्युनिटी को सर्विस भी. देखिए इसको भी हम भूल जाते हैं कि कम्युनिटी हमसे क्या डिमांड करती है. आज हमारा स्टूडेंट वॉलंटरी काम करने के लिए तैयार नहीं है. टेक्नोलॉजी में वो इतना ज्यादा फोन में और सोशल मीडिया के ऊपर इतना एक्टिव हो गया है कि बहुत सी ये एक और एक तरह का चैलेंज है जिसको हमें कैपिटलाइज करने की जरूरत है कि हाउ डू वी मेक देम यूज बेनिफिशियल यूज ऑफ दीज गैजेट्स एंड दिस टेक्नोलॉजी. इसके अलावा हमारे जो और भी बहुत से जितने भी चैलेंजेस हैं बीइंग अ वुमेन यूनिवर्सिटी, मेरा अपना ख्याल है कि वो थोड़े से डिफरेंट हैं. हमारी जब रिक्रूटमेंट होती है यहाँ पे टीचर की, तो जब वो शादी हो जाती है तो उसके इन लॉज कहते हैं राइट नाउ इन एवरी सिंडिकेट आई एम क्वेश्चनड व्हाई सो मेनी लीव्स. somebody is going on maternity leave, somebody is going on leave because वो घर वाले उसे allow नहीं कर रहे continue the job, and we keep on accommodating them till such time कि हम उनको retain कर सकें. हमारे पास यूनिवर्सिटियां हम बनाते हैं लेकिन हमने कोई लैब्स नहीं दी. हमने वही जो कॉलेज से अपग्रेडेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी इज अ ह्यूज चैलेंज. माइंडसेट नहीं बदलता सर, वो रिसर्च की तरफ नहीं आते. वो जो कॉलेज के 1 घंटे के लिए आना और क्लास लेके चले जाना,
वो वाला माइंडसेट ट्रांसफॉर्म करना बहुत मुश्किल है. So there are huge challenges. We can take another maybe wave of discussion if you like. But I think मैं अभी आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैंने PhD की UK से. When I was coming back तो मैं अपना एक थीसिस लेके गई अपनी उधर आपकी जो हमारी कॉन्सुलेट है, तो मैंने कहा कि ये थीसिस क्योंकि आपने मुझे फंड किया था, तो आई विश टू गिव दिस टू द एम्बेसी ताकि इससे कोई पॉलिसी डिसीजंस हो सके. उन्होंने कहा हमें इस थीसिस की जरूरत नहीं है. There might be so many theses, so many researches जो कि पॉलिसी में ट्रांसफॉर्म नहीं होती. हम जो भी डिसीजंस करते हैं हायर एजुकेशन के मुतालिक वो वैक्यूम में करते हैं. So many decisions are being made, statutes are being made, VCs are not involved. तो ये हमारे इश्यूज जो हैं वो हम वाइस चांसलर बहुत कोशिश करें. मुझे लगता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एनॉर्मस. अब एक क्लास में अगर आपने 120 के करीब स्टूडेंट्स रिक्रूट किए हुए हैं, सिंगल टीचर उनको क्या हम फिर कहते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, किस तरह उनको उस तरह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देगा अंडर सेमेस्टर सिस्टम. So these are so many issues, and at the end of the day I wonder what we can do and how we can do. We try our level best कि कितना भी हम कोशिश कर सकें. लेकिन this seminar or webinar most probably can help in that or provide us some guidelines. Thank you. जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छी आपने बातें की. पर मुझे एक बात बताइए आप लोग सारे, एंड फतेह साहब आई एम कमिंग टू यू, मुझे बताइए कि आज कितने वाइस चांसलर यहाँ बैठे हुए हैं? मेरा ख्याल मैं 5 या 6 गिन सकता हूँ. जिस व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने बात शुरू की थी 115 है और पूरे मुल्क में 250 यूनिवर्सिटीज है. तो क्या वाइस चांसलर्स पे ये क्या कहते हैं एक किस्म की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है ऐसी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें? क्या रिस्पॉन्सिबल वाइस चांसलर्स आर ओनली देयर टू लिव इन बिग हाउसेस एंड एंजॉय देमसेल्व्स? मैं जरा सख्त अल्फाज में बात कर रहा हूँ. प्लीज टेल मी. फतेह साहब, एम आई रॉन्ग? प्लीज प्रूव मी रॉन्ग. अनम्यूट कर ले फतेह साहब, यू आर नॉट अनम्यूटेड. अच्छा, ओके. सो सॉरी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नदीम फॉर दिस सेमिनार. और जिस तरह से आपने बात की कि वाइस चांसलर, मेरा ख्याल है वाइस चांसलर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में इन द लाइन ऑफ फायर हैं. वो सारा दिन पता नहीं कितने उनको होंगे, तो शायद ना अटेंड कर सके, लेकिन आप उनको अटेंड करना चाहिए था. आई फुली एग्री. आपने जो बात शुरू की कि स्कूल्स कहते हैं कि हमें अच्छे टीचर नहीं मिलते और हम यूनिवर्सिटियां कहते हैं कि हमें अच्छे स्टूडेंट नहीं मिलते. तो ये एजुकेशनल साइकिल का मसला है, बिल्कुल ठीक है. लेकिन एक दूसरी बात मेरे जहन में आ रही थी उसी टाइम पे कि जब हम प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में पढ़ते थे उस वक्त, आज मैं उन टीचर्स को देखता हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो कोई बेस्ट टीचर थे. वो अच्छे टीचर थे लेकिन ज्यादा कमिटेड टीचर थे. वो अपना टाइम कमिट कर रहे थे और उसी वजह से वो जो बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक अंग्रेजी है, बेसिक साइंस है, वो उस हद तक हमें पढ़ा सकते थे. वो कोई आज के अगर हम जो आइडियल एक्सीलेंट टीचर की एक्सपेक्टेशन रखें उस तरह के टीचर नहीं थे, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है. रीजन उसके दो हैं मेरा ख्याल है. एक तो उस वक्त सोसाइटी वैल्यू दे रही थी टीचर को और टीचर वैल्यू दे रहा था अपने जॉब को. तो एक सोसाइटल बिहेवियर में मसला है. अभी जो टीचिंग की जॉब है वो इतनी आप समझिए कि वो लो मोरल पे लोग करते हैं and they are not interested in teaching job. Finally primary teacher वो बनेगा जिसको और कोई जॉब नहीं मिलती, तो उसकी वजह से भी एक इशू है. और दूसरा, उस वक्त गवर्नमेंट प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को ऑन कर रही थी. रिसोर्सेज लिमिटेड थे, इतने ज्यादा पैसे नहीं लगा रहे थे, लेकिन उसकी जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वाज मच बेटर. सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट वाज मच बेटर एट दैट टाइम. उसकी वजह से लोकल रिक्रूटमेंट हो रही थी, सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट नहीं थी, सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट नहीं थी. तो उस वक्त अच्छे टीचर लोकली हर तहसील में, हर यूनियन काउंसिल में या हर स्कूल में शायद मिल जाते थे. हमारे पास अभी प्राइमरी सेकेंडरी में आप अगर बजट्स देखें तो प्राइमरी सेकेंडरी के बजट्स हायर एजुकेशन के बजट के मुकाबले में 10% अगर हायर एजुकेशन में आता है, 90% ऑफ एजुकेशनल बजट गोज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन और उनके पेंशन और दूसरी चीजें. लेकिन उस तरह की गवर्नमेंट की जो ओनरशिप टू हायर एजुकेशन और टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन नहीं है. एज अ रिजल्ट हमारे पास यूनिवर्सिटी में जो बच्चे आते हैं, अभी हमने एंट्री टेस्ट किया है, एडमिशन टेस्ट दिया है, बोर्ड के रिजल्ट तो बहुत अच्छे हैं. उसमें तो लोगों ने 90% से ज्यादा सिक्योर किए हैं मार्क्स, लेकिन हमने टेस्ट दिए हैं तो रिजल्ट अच्छे इतने नहीं है. तो हमारे पास जो इनटेक है दैट इज नॉट दैट गुड उसमें. और फिर देन इनटेक probably the creamy layer would go to medical education, creamy layer would go to
इंजीनियरिंग एजुकेशन और फिर अभी बिजनेस एजुकेशन भी काफी पॉपुलर है, तो वो उन यूनिवर्सिटियों में चले जाते हैं। और खास तौर पे बिकॉज आई एम फ्रॉम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास बिल्कुल जो लेफ्ट ओवर्स हैं, जो रेजिड्यूज हैं, जो 10% एडमिशन ले सकते हैं एजुकेशन में, तो हमारे पास वो आते हैं। जो ज्यादा अच्छे बच्चे हैं वो they would prefer to go to a medical university, to an engineering university or to a business school, तो वो वहां चले जाते हैं। तो हमारे पास इनटेक में काफी प्रॉब्लम है। सेकंड, आई फुली एग्री, मैडम शहनाज और डॉक्टर रुखसाना ने बात की और इनिशियली डॉक्टर नदीम का कमेंट था कि क्वालिटी ऑफ अंडरग्रेजुएट एजुकेशन हमारी उसमें काफी प्रॉब्लम है। उसकी एक रीजन ये है कि ओवरऑल यूनिवर्सिटी गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरी रीजन ये है कि हमारे पास अच्छे टीचर नहीं है। अभी मैंने यूनिवर्सिटी में काफी अटेंडेंस पे एफर्ट लिया है, तो स्टूडेंट हमारे क्लासेस में बैठने की जगह नहीं है, इतने स्टूडेंट आते हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी में गया था रात को 9:45 बजे, और आप बिलीव करें सेंट्रल लाइब्रेरी में कोई चेयर खाली नहीं थी, और रात को 9:45 बजे स्टूडेंट बैठे हुए थे। लेकिन उनके हाथ में नोट्स थे, जो वो पढ़ रहे थे, फोटोकॉपी या नोट्स की किताबें नहीं उठा रहे थे। तो मुझे अंदाजा हुआ कि हमारे क्वालिटी ऑफ टॉक जो है, जो क्वालिटी ऑफ टीचर्स जो है, वो उसमें प्रॉब्लम है। प्रोफेसर, जैसे नदीम साहब ने कहा कि कम है और हमारे पास जूनियर स्टाफ ज्यादा है। मेरा ख्याल है पब्लिक सेक्टर की जो पुरानी यूनिवर्सिटियां हैं उसमें प्रोफेसर ज्यादा हैं, एक्चुअली जूनियर स्टाफ कम है। हमारे पास लेक्चर और असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। मैं सोचता हूँ कि 10 साल के बाद ये जब प्रोफेसर जो भी हमारे पास हैं, एसोसिएट प्रोफेसर जब रिटायर होंगे, तो हमारे पास वो गैप फिल करने के लिए लेक्चर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं होंगे। तो उसमें एक तो यूनिवर्सिटी गवर्नेंस उसकी जिम्मेदार है, सेकंड हमारी जो टीचिंग की क्वालिटी है उसका इश्यू है, थर्ड हमारे सिलेबस में प्रॉब्लम है। जैसे कहा गया कि वो एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं मिलती क्योंकि वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को हम उस तरह से मीट नहीं करते। सिलेबस हमने बना दिया, हर 4-5 साल के बाद HEC उसको रिवाइज कर देती है, लेकिन वो सिलेबस अगर वो बिल्कुल इंडस्ट्री के साथ मिलके, जो हमारे फ्यूचर एम्प्लॉयर्स हैं उनके साथ मिलके अगर हम उसको इम्प्रूव करें, ज्यादा स्टूडेंट को एक तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं वो हम पढ़ा देते हैं, वो शायद ठीक ही पढ़ा देते होंगे, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंस है, उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है और उसकी फिर लाइफ स्किल्स हैं, वो हमारे स्टूडेंट्स में कम आते हैं। लास्ट ईयर मैंने एक तजर्बा किया कि हमारे स्टूडेंट मैंडेटरी है कि इंटर्नशिप पे सारे जाएं, तो वो यहाँ वहाँ से इंटर्नशिप लेते हैं, कुछ ठीक इंटर्नशिप होती है, कुछ कोई सर्टिफिकेट लेके आते हैं अपनी डिग्री के लिए। लेकिन लास्ट ईयर मैंने कहा कि जो 10% ऑफ स्टूडेंट्स उनको हम सिलेक्ट करेंगे थ्रू प्रोसेस, और उनको फिर हम प्री इंटर्नशिप एक फिनिशिंग स्कूल करेंगे। फिनिशिंग स्कूल वाज फॉर 1 मंथ ओनली, लेकिन 1 महीने का जो फिनिशिंग स्कूल हमने किया और उसके बाद वो इंटर्नशिप पे गए, इंटर्नशिप को हमने सुपरवाइज किया, और वो मुझे अभी भी जहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो उसका मुझे काफी अच्छा फीडबैक है। तो मेरे जहन में यह था कि अगर 1 महीने की ट्रेनिंग से हम स्टूडेंट को बेहतर कर सकते हैं, जिसकी एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्यों ना हम उसको अपने सिलेबस का हिस्सा बना दें और उनको फर्स्ट ईयर से वो चीजें पढ़ा दें। अगर कोई IT का स्टूडेंट है तो कोई एप्लीकेशन फर्स्ट ईयर में पढ़ ले, कोई सेकंड ईयर में पढ़ ले, कोई थर्ड ईयर में कर दे, ताकि वो फाइनली फिर भी हमें शायद फिनिशिंग स्कूल करना पड़े कि उनको फाइनल टचेस देने हैं, उनको ब्रॉडर पिक्चर बतानी है, लेकिन उनको हम थोड़ा बहुत फोकस करें कि वो जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, जो जॉब मार्केट की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम अपने स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत उसकी एजुकेशन दें। और दूसरा जो ये हुआ था इसका क्वालिटी ऑफ रिसर्च, मेरा ख्याल है क्वालिटी ऑफ रिसर्च पे मैं जब HEC में था तो हमने एक रिसर्च जर्नल्स का रिकॉग्निशन सिस्टम बनाया। उसमें काफी लोगों के कंसर्न थे, कुछ वाइस चांसलर कह रहे थे कि वो रिकॉग्निशन में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, लेकिन बेसिकली वो एक ऑब्जेक्टिविटी उसमें हम लेके आना चाह रहे थे, किसी तरीके से जर्नल्स को हम रिकॉग्नाइज उनको करें जो जेन्युइनली रिकॉग्निशन के लायक हों। उसके अभी तक वो HR का सिस्टम चल रहा है, मेरा ख्याल है उसमें काफी डॉक्टर नदीम की रिपोर्ट भी है उसमें ब्रिटिश काउंसिल के साथ मिलके कि उसको रिसर्च को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। उसमें आपने बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज की हैं AERC की, और अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मेरा ख्याल PIDE की होगी, AERC की तो मुझे याद है कि आपने उसमें केस स्टडी दी हुई है। तो बेसिकली जो इश्यूज हम फेस कर रहे हैं, अच्छा इसके क्योंकि सारे वाइस चांसलर्स को पब्लिक सेक्टर में पता है कि हम बजट के मसाइल हैं, उसको मैं यहाँ पे बिल्कुल जिक्र नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ फ्लैग कर रहा हूँ कि बजट इज ऑल्सो एन इश्यू, कि हम अगर तनख्वाह नहीं दे सकेंगे तो हम दूसरी चीजों में क्या फोकस करेंगे। जो एक्सपेंशन की बात हुई है कि हम एक्सपेंड ना करें,
मेरा ख्याल है इसमें दो व्यू हो सकते हैं। एक्सपेंड बेशक करें, क्योंकि हो सकता है हमारे यूथ की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो यूथ ज्यादा उनको एक्सेस मिल जाए, लेकिन उसमें सोचने की जरूरत यह है कि एक्सेस एट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी न करें एक तो, और दूसरा एक्सपेंशन वहां पे करें स्ट्रेटेजिकली। मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर में हमने इरिगेटेड एग्रीकल्चर पे सारी जिंदगी फोकस किया, हमने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे या एरिड एग्रीकल्चर पे बिल्कुल भी काम नहीं किया। एरिड एग्रीकल्चर की एक इंस्टीट्यूशन फेडरल गवर्नमेंट में रावलपिंडी में है, लेकिन अगर हमें एक्सपेंशन करनी है तो हमें थेमेटिकली सोच के कि कौन से सब्जेक्ट में एक्सपेंशन करनी है। इमर्जिंग जो डिसिप्लिन्स हैं उसमें बेशक एक्सपेंशन करें, लेकिन इसमें कोई सिर्फ ये नहीं है कि डोर स्टेप पे जाना है, इस पे ये है कि हम किस सब्जेक्ट पे एक्सपेंशन की बात करें। तो मेरा ख्याल है वो उसको उस तरह से हमें देखना चाहिए। लेकिन टू समराइज कि इसमें एक तो हमें क्वालिटी ऑफ इनटेक उसको थोड़ा बेहतर करना है, दूसरा जो अनएम्प्लॉयमेंट का है कि हम स्किल्स को बेहतर करें, थर्ड मेरा ख्याल है मैडम शहनाज ने जो बात की है कि हमारी इकोनॉमी की कितनी एक्चुअली ऑब्जर्वेटिव कैपेसिटी कितनी जॉब्स क्रिएट करती है, वो भी एक क्वेश्चन है। या अगर इमिग्रेशन पे लोग जाते हैं तो इमिग्रेंट वर्कर्स के लिए, स्किल वर्कर्स के लिए हम कितनी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे काम करते हैं, और हमारे माइग्रेशन के प्लेसमेंट सेंटर्स हैं, ओवरसाइज की फाउंडेशन कितनी एक्टिव है, तो उसमें देखना पड़ेगा। लेकिन नो डाउट क्वालिटी ऑफ अंडरग्रेड एजुकेशन हमें इम्प्रूव करनी चाहिए, सो दैट विदाउट एनी रीजन लोग मास्टर्स और पीएचडी में जाएं। जो जाना चाहते हैं बेशक जाएं, लेकिन विदाउट एनी रीजन न जाएं। So thank you very much. I think thank you, thank you. Let me turn to Haji. Ji, may I एक comment please, may अगर if you allow me. I just want to go back to the issue of employment and unemployment. मेरे ख्याल में आपने statistics काफी सारे हमें दिए पहले, which look very disturbing क्योंकि ये broad statistics हैं, urban, rural, male, female और फिर total. लेकिन मेरे ख्याल में कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे आपके पास ऑलमोस्ट 85-90% एम्प्लॉयमेंट है आपके ग्रेजुएट्स की। And I know this LUMS has very high graduation percentages, employment percentages. So do NUST and several other good universities. मैं अपना example देती हूँ ज़ाविस्ट का कि हमारे तकरीबन 88 to 90% students have jobs within the first 3. Many of them have jobs before they leave, or within the first 2 to 3 months. हमारे तकरीबन 90% students हैं, उनके हाथ में job offers होते हैं। अब सवाल हमें पूछना है, we have to go beyond just these larger numbers. मेरा ख्याल में आपकी intention भी यही थी। So what is happening to those universities whose students, large percentage, are not getting jobs? Let's look where the problem lies. एक तो ये ज़्यादा at some future date discussion करने की ज़रूरत है। दूसरी, हम internships भी कराते हैं। Right from the last 20 years, Zadist has made it mandatory that every student cannot graduate, cannot get a degree without a minimum of 8 weeks of internship. हम job fairs भी करते हैं, placement fairs भी करते हैं, वहाँ से feedback भी आता है, बहुत सारी अच्छी universities भी करती हैं। लेकिन जहाँ पे ये नहीं हो रहा, जहाँ पे शदीद ये मसला है रोजगार का, अनएम्प्लॉयमेंट का, वहां पे देखने की जरूरत है। दूसरी बात ये कि किस किस्म के जॉब्स मिल रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट कि जॉब मिल गया 40,000 एक महीने का या 50 या 60, व्हाट टाइप ऑफ जॉब, और कितनी देर के बाद उनको उस जॉब में ट्रेनिंग और रीट्रेनिंग की भी जरूरत होती है, कितनी दफा वो जॉब्स चेंज करते हैं, कब उन्होंने वापस आना होता है फॉर फर्दर एजुकेशन। ये पूरी फील्ड है ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड relevant skills to the marketplace. मैं हमें किसी इंडिकेटर को जब हम देख रहे हैं ना, तो हमें सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि 31% are unemployed या 66% females are unemployed. हमने देखना है कि क्या नस्ट की फीमेल्स अनएम्प्लॉयड हैं 66%? I don't think so. क्या नस्ट के 31% या GIK के या NUMS के या IBA के अनएम्प्लॉयड हैं इन परसेंटेजेस में? इस तरह तो नहीं है। तो मेरे ख्याल में इसमें जरा ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत है। और यूनिट कॉस्ट खर्चा जो होता है हुकूमत का पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में, ये मेरे ख्याल में डॉक्टर मरी ने भी बात की है। फाइनेंसिंग इज अ वेरी बिग इशू। हाउ लॉन्ग इज गवर्नमेंट गोइंग टू फाइनेंस 100% large universities with 20-30,000 students? So there are many aspects of the university sector
that need to be addressed. और हम हमेशा colleges को छोड़ देते हैं बीच में से. Schools की बात होती है, and colleges, which are a very neglected sector, they are not even part of the discussion most of the time. So I just stop there because issues the was a discussion about that. Let's turn to the Vice Chancellor of LUMS now. Vice Chancellor Saab, please bataiye, what have we created? This is not a mess that God had wrought. This is a mess that we have wrought. How can we unravel it? Unmute yourself, please. Gee, I can't seem to unmute my video, so someone will have to do it on your side. Video khol dein, inka kaise khulta hai? Chaliye, why don't you start? We'll try and do what we can. Go ahead. All right. Assalamu alaikum, and thank you for leading this very important discussion. Nadeem Saab, हौसला रखें, आपने बहुत सी इस तरह की important चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और हम आपके साथ हैं. We do want to participate and we need more opportunities like the ones you're opening up. So I want to thank you first. And also my colleagues who've very clearly articulated what the problems and structural issues are. I'll add a couple of problems and issues, but I think we should really start focusing our discussion on solutions because problem space itni badi hoti jati hai ki we feel like we're in quicksand, you know. So 2 problems first and then 3 solutions that I can, maybe concrete ones that I hope others will add to. So, you know, being a member of the HEDP steering committee, I was really actually aghast to learn that, in fact, this $400 million we have from the World Bank, which has been given to Higher Education Commission and HEDP to lead reforms and intervene in research and teaching and information technologies, etc. This is a loan. So you're actually borrowing money to do research and build equity in a country. That just does not make any sense. No other country in the world does that. So the first big issue is you can't drive a car without the engine. So here, if the engine is going to be, you know, you're putting in fuel, but there's no engine. And that fuel too, you have to pay back and somehow extract it from somewhere. और ये पूरे पैसे आ रहे भी हैं तो हमारे पता नहीं कितने इदारों में आएंगे बाकी पता नहीं कहाँ जाएंगे हवा में घुस जाएंगे या they have to fill up other loans they have and they revolve their debts for the government, which is really in a bad situation economically speaking, but that's another story. So this is a fundamental issue that if you're going to spend less than 1% of your GDP on education at large, let alone higher education, you're not going to get anywhere. You're just going to be scratching the surface. So, okay, let's assume we have some resources. Let's work with the limited resources we have. The second big issue I see, which hasn't been really spoken to as much, is that about university autonomy. We just cannot continue to be dictated about how universities are run by people who have no idea how they run. So this is to the point that Shahnaz Saiba earlier mentioned that, you know, there are political agendas that just kind of cancel everything else. So if you're trying to do some good, you're going to have interference at all levels, governance levels, structural levels, you know, appointments and progression, et cetera, et cetera, et cetera. You cannot mix oil and water, and this is what's going on in this country, and this has to change. So if you don't do some structural things, you're going to be just, you know, scratching on the surface. All right, enough said about problems because it's a long list of problems. Let's talk about solutions. I think I have come to the conclusion after almost 4 years here that, you know, you cannot have a competitive model of higher education in Pakistan. It's not going to work because very few of the universities that are doing well, and there are certainly, you know, maybe you can say 10, 15 that are at pretty good standard, at least regionally, some even, I would say internationally writ large. But what happens is when they succeed, then, you know, the thing is, we can't give them more money or we can't give them more, even if they compete, right? And they rightly earn a grant, you cannot give it to them because there's a quota system here. You cannot give more than X to whatever the university might be. So this is something that we can fix very quickly, that instead of thinking just competitively, why don't we think collaboratively, where we lift other boats as resources are allocated?
So in that, I'll give you the second very concrete example that just happened last weekend. And I will give credit here to HEDP that arranged a meeting between 9 vice chancellors, and it was not easy to pull this off. And, you know, I don't know how they selected them, but they did. They included NUST and Aga Khan and Habib and ComSats and Hazara and virtual, even virtual Allama Iqbal and one or two more. So we got together. What was the agenda? The agenda was that HEC over the years, and credit again goes to the people responsible there, that the broadening of the curriculum was envisioned, right? We said 2 mandatory courses हैं, Islamiyat and I believe Pak Studies, उसको हम बड़ा कर देते हैं, उसको 13 बना देते हैं, 11 और उन्होंने बिन्स में से आप चूज कर लें, social science, pure science, humanities and social science, and expository writing, etc. Good idea. Liberalize the curriculum so people get breadth. But nobody thought about quality. Nobody said who's going to teach them, what will be the standards of these courses, etc. So if you look at 13 courses that become mandatory, the first question that comes to mind is you've got to establish a standard for these 13 courses because they will be core. They will be a quarter of the curriculum. So this is what the meeting was all about. How do we standardize to some extent quality and infuse it so that other universities can benefit from that standard? And the idea was, let's leapfrog into the digital age. Let's have some asynchronous courses. And those asynchronous courses, we would contribute, the universities that wish to. Any universities that wish to, that meets a global standard, we can define that standard. Coursera has, edX has, FutureLearn has, many universities have, 2U has. There are many platforms now that have defined that standard. We can do it too, no problem at all. So let us contribute these from 1 to 13 courses, make them available for all universities at almost zero cost. ठीक है, तो अगर आपके पास खुद पढ़ाने वाले नहीं है, जो आप बिल्कुल rightfully point out कर रहे हैं, at least the students can benefit from those quality standards and they can choose. And they don't even have to get into a car or live in a residence. They can get these online, learn anywhere, anytime. This is not rocket science. We can all do this. So I'm so happy to tell you that people did volunteer. We all signed up and said, we are going to make a contribution. And I'm going to urge all of my colleagues here to think along those lines that, look, we have to come up with the solutions. Please, let's not wait for HEC or HEDP or someone else to tell us what to do, especially outsiders. I think this is a game that's going on. We get money, we hire people from outside. Those outsiders then come, they parachute in, they leave. They have no idea, and they've made no difference to our education system in the long run, in the last 40 years, if you want to count. So we have homemade solutions right here. So I'll end with one more example, if you permit me, which I think is another fantastic example we are going through. I've spoken at the PIDE conference when you held it in very courageously in Peshawar, and good for you on that, where we had a very good audience. And here is an example of a 35-year-old university. We're celebrating our 35th anniversary this year. And we teamed up with a 3-year-old university, University of Baltistan. Acha, we don't have an MOU, by the way. We have not signed anything. किसी को ना तस्वीर ली है, ना किसी को बताया है. बात ये है असल में, लोगों को ये समझ नहीं आ रही है कि, you know, who's doing who a favor here? Actually, we are both going to gain from this partnership for the following reason. And मैं इसका नतीजा बताऊं, 5 महीने से हमारी बात हो रही है. बात ये हुई है, इसमें the output is, we are going to co-teach 5 courses in Skardu. So उनके 2 टीचर, हमारे 1 टीचर 1 कोर्स पढ़ाएंगे. ऐसे 5 कोर्स हमने चूज किए हैं जो वो समझते हैं will have the highest impact for their development. So we chose a course on water hydrology. We chose a course on energy, which is a big issue for them there. We chose a course on e-commerce, on entrepreneurship, and on life sciences. Now, these courses means research. It means collecting data, and it means solving problems of people in those communities where we can work with them. And believe me, this benefit will go to LUMS, not to University of Baltistan, because we'll be working with primary data that the whole world wants. Climate change is happening in the northern parts of Pakistan.
We think of the Amazon and we say, hey, that's where climate change action is. Actually, it is in our northern areas where the snow, you can see it melting, you can see the erosion, you can see the effects. And this is where scientists want to be from around the world. So I would say this is a great, great attraction for us to take advantage of doing research in those areas. Now, in the same agreement that we have, and this is just an understanding, we're going to take 150 of our students and pair them with 150 of Skardu students, and they will live together. People in the northern areas live 20 years more than we do. They have habits that are better than ours. Why do we have to spoil them by telling them to come here? We should be going there. So when we think of these so-called underdeveloped areas, they're actually far more developed than we think they are. We should not be assimilating them in big cities, but we should be going where on the front lines as teachers, as researchers, and as students, and contribute to nation building. And there is so much to really be proud about and celebrate our heritage. वहां पर क्या क्या चीजें मिल रही हैं, वहां पर बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, वहां पर हर तरह के लहजे हैं, ज़बानें हैं, हम तो सीख सकते हैं. So all of this is a big learning curve, and I think the glass is really half full if we stop thinking just about problems and think about solutions. I'll stop there. Thank you, Ji. Very kind, very kind. I think what you said about collaboration is very important. What I find in Pakistan is we are living in silos. मैं जब भी बाहर पढ़ा हूँ, जहाँ भी पढ़ा हूँ, and all of you have done that too, I find universities are collaborating a lot. There's a healthy exchange of faculty. There's a healthy exchange of ideas. They are networked with professional associations. For example, I did a paper on the history of university in the US, and I found that the influence of professional associations, even in Europe, the influence of guilds on universities was huge. And they network through the professional associations, the guilds. अच्छा, हमारे यहाँ ये नेटवर्किंग क्यों नहीं है? हमारे यहाँ क्यों? ये तो हमारा कसूर है ना. चलो हम अथॉरिटीज को ब्लेम कर सकते हैं, पर हम जब वेबिनार करते हैं, जब हम कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट फैकल्टी. जब मैं शिकागो में था या एलएसई में था, मुझे याद है फैकल्टी तो वो दूर दूर यूनिवर्सिटी से आती थी फैकल्टी सुनने के लिए, और जाती भी थी. वो उनको शौक था. हमें शौक क्यों नहीं है? ये भी तो हमारा मुश्किल है ना. जी मंसूर मलिक साहब बताइए. प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टेल अस व्हाट यू वांट टू से. मंसूर मलिक साहब जी बोलिए जी. ये मंसूर साहब, you unmuted yourself. You muted yourself. Unmute. Can you hear me? जी, we can hear you. Go ahead. Okay. I was the founding teacher of NUST New Campus. और वे बैक इन 2003 से लेके 2009 तक हमने बहुत कोशिश की. इसमें बहुत सी जो बातें आप कर रहे हैं, that is data driven, and we try to collect data at the national level. Data sharing हमारा इतना weak area है. The research जो है, I'm talking about we wanted to do GIS mapping of all the glaciers that we had. I went to all over the national level. Dr. Ishwaq Saab, the water resource management ke advisor to the Prime Minister. Koi data nahi mila. We had to send 4 of our engineers and scientists up the Sugar Valley. We had a lot of data collected from each and every glacier. Kitna uski depth hai, kya uski wo rain ka kya hai content. और सारा वो GIS mapping करके हमने national level पे provide किया. We wanted it, to have access to that data. We had copies with NUST, but that data disappeared at the national level. So what I'm trying to submit is, इतने problem जो हम आज discuss कर रहे हैं, किसी ने data-driven solutions नहीं दिए हैं. We are still, repeating some of the problems. उसके solutions भी हो गए हैं. आपने बिल्कुल सही बात की. Silos में काम हो रहा है, research भी silos में हो रही है, डेटा कलेक्शन भी साइलोस में हो रही है, और उसकी वजह से हमारा रिसर्चर बेचारा बैक टू 0 अगेन ही. तो वर्टिकल ग्रोथ होगी अगर हम एक नेशनल लेवल पे करेंगे. तो अब हमने कोशिश की थी एज NUST लेवल, एट लीस्ट वी कुड कलेक्ट द नेशनल डेटा. सो आई वांटेड टू ओनली सबमिट दिस थिंग कि आवर सॉल्यूशंस इन रिसर्च, इन एजुकेशन शुड बी डेटा ड्रिवन. फॉर एग्जांपल, when I was heading one of the political think tanks of education, 2011-12 में we were short of 1 million
technical training people, 1 million. And we were producing only 10,000 in all the vocational training institutes. You know, one of my colleagues talked about vocational training, but the question is, where is the data? How much we require? 2012 में अगर 1 million चाहिए थे हमें, आज गालबन हमें 2 million चाहिए होंगे, और production हमारी क्या होगी? 10,000 से 20,000. So we need to do two things. I think I'll stop here. One is data, and the second is gap analysis. Whatever we want to solve next 5 years, 10 years in education and research, let's see where we are today, and annually let's look at whether the gap is being reduced or increased. Thank you. Mansur sir, थोड़ा सा मैं ऐसे difference रखूंगा, because quite frankly I think data बहुत available है. I think ये हमारा बहुत excuse होता है, data नहीं है. Data हमारे पास बहुत है और बहुत data available है. हमने जब देखा, वर्ल्ड बैंक ने हमें अभी recently कहा, recently नहीं, 10-15 साल पहले वर्ल्ड बैंक और स्टेट बैंक दोनों ने कहा कि 10 मिलियन हाउसिंग शॉर्टेज थी. हमने अभी देखा डेटा बहुत मौजूद है, कोई 10 मिलियन हाउसिंग शॉर्टेज नहीं है. प्राइम मिनिस्टर ने पूरी पॉलिसी बना ली है 10 मिलियन हाउसिंग शॉर्टेज पे, पर हाउसिंग शॉर्टेज कोई नहीं थी. डेटा अवेलेबल था. मुश्किल ये थी कि आपकी यूनिवर्सिटीज काम नहीं करना चाहती. और एक और बहुत बड़ी शॉर्टेज है जो मैं रेज कर दूं यहाँ प्लीज, कि जी आपकी यूनिवर्सिटीज में रीडिंग कल्चर कोई नहीं है. सबसे बड़ी फेलिंग हमारी यूनिवर्सिटीज की, रीडिंग कल्चर कोई नहीं है. मैं जिस ऑडियंस में जाता हूँ मैं पूछता हूँ आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, और हर कोई कहता है मैं पढ़ता नहीं. हंस के लोग कहते हैं बड़े खुशी से कि मैं नहीं पढ़ता. और जब उनसे पूछो क्यों नहीं पढ़ता, कहते हैं यूनिवर्सिटीज में बहुत काम होता है, हम पढ़ते नहीं, हमें टेक्स्ट बुक पे बहुत टाइम लग जाता है. फिर अभी मुझे एक फतेह साहब ने भी बताया था कि लोग टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते, नोट सिर्फ पढ़ते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है. ये हमारा इंटरनल क्राइसिस है, किसी ने किया नहीं. डॉक्टर आफाक साहब, नदीम भाई, आप तो वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे थे, मैं तो आपको इंटरनल बात कर रहा हूँ. Do you know there are 1,641 glaciers God has gifted us? Do you know the depths of them? Do you know we have enough water for the next 200 years? Nobody knows in this country. Everybody gets up in the morning and says, water shortage ho rahi hai, mar jayenge. Where is the data? So the data is lacking. We have recorded each and every glacier in Pakistan, 1,641. The depths are there recorded. हम radars लेकर गए, उसकी पूरी depth हमने देखी है. We are talking about internally generated data, not foreign, sponsors data, and not aid wala data nahi. Yeah, all I'm saying is data is available. Huh? The question is we have to get to the next level to discuss the data, understand the data, and work with it. If you're not reading, if you're not discussing, if you're not holding webinars, we are not understanding the data. Where is the national narrative if you have no webinars? Ji, Dr. Afaq sir, Professor Dr. Afaq. Ji, Assalamualaikum. First of all, I'm representing Dr. Professor Mukhtar Ahmed from National Skills University. So we have identified a number of problems. How to move forward. Now, most of you over here are vice chancellors and decision makers. The problem is most of the decisions are made politically, and we don't have the guts to, sorry, it's a harsh word, to say no to them. Recently, there's a policy of artificial intelligence. Everybody is getting onto this bandwagon. They don't even know what is AI. Similarly, we did the same thing a decade ago about telecom. Every university started telecom program. We are producing so many engineers. We have a Pakistan Engineering Council. And tell me frankly, did any one university or any one program got banned by PEC? They would give you one more extension, one more warning, one more this. They have the data. Every student who's enrolled in an engineering program, it has to go on their website. So we are overproducing engineers. And why are we producing engineers? Because they get a good job abroad. So we are spending millions to produce manpower to go abroad. Similarly, so somebody has to tell them, okay, now a university wants to sell engineering program because it sells. You will sell arts or other program for maybe 40,000 per semester, but an engineering program maybe 140,000 per semester. So we have to tell them, stop. This is not selling. People, there are not enough jobs. We have to relate our education with the job market. If we are not state-of-the-art country, we don't have so much industry.
We need to have technologists who can get jobs. We need to tell the people, if we are doing producing graduates in mathematics or physics, what is their job opportunity? Become a scientific officer in a government organization, become a lecturer in a school or a college. So we are not producing people who are ready for the job. They have practical skills, and they should be knowing what is happening in the industry, what is the requirement in the industry. So during the last decade, we have focused our 100% attention to research. We cannot even afford research. We cannot even implement that research in our country. Most of our research is used abroad. It is published abroad. It is for their benefit. We should be focusing partially. Not every professor is a research professor. We have in MIT, you can see professors who are not even PhDs. They are from the industry. So we should have a balance between teaching, research, and industrial liaison. So unless we do that, our graduates are not going to get a job. I tried to hire an AC mechanic, and he said, how much you are going to pay? I said, okay, as a mechanic, it's grade 14, we will pay you 25,000 rupees. He said, I make 5,000 rupees a day. Why should I get a job in your university? So the point is, if you are a technician and you know your job, you can earn a lot and you don't need a job. So if we focus, what we are doing is, our university graduates, they can't find a job, they go and get a master's degree. And still, if they don't get a job, they go and get a PhD, they enroll in a PhD program. And a lot of PhDs, they don't have even a single year of job experience in the industry. They don't know what are the problems in the industry. So they have done theoretical research, but they don't know how to apply it in the industry. So we need to bridge this gap, and we need to tell the decision makers above that, sorry, this is not your cup of tea. We are there to tell you what is the requirement. We have to say no to the higher ups. So what you are saying is not feasible. We are in the front line battle, and we have to say no to them, and we have to guide them. Thank you. Afaq sahab, देखिए, I don't agree with this at all कि political interference है. Yes है, but quite frankly, काफी ज़्यादा autonomy universities को भी है. Universities को autonomy है पढ़ाने पे, universities को autonomy है अपनी knowledge creation पे. Unfortunately, मैं देखता हूँ university is not interested. University vice chancellors are not interested. University administration is not interested. मैं बहुत यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, conferences करवाता हूँ, कोशिश करता हूँ उनको galvanize करने की. I'm afraid मुझे सबसे ज़्यादा opposition university bureaucracy से मिलती है. And vice chancellors are sitting on a pedestal. They are not really engaged in academics. I will say this openly. And quite frankly, you do not want your researchers, even professors get scared. जब मैं प्रोफेसर को कहता हूँ मैं कॉन्फ्रेंस कराना चाहता हूँ, वो कहते हैं नहीं खुदा के वास्ते ना कराना, हम चुप करके काफी जिंदगी एंजॉय करें, तुम आके खराब क्यों करते हो. तो ये भी एक मसला है. दूसरी चीज जो आपने कही है कि जनाब सिर्फ यूनिवर्सिटी, आई थिंक हमारे यहाँ एक और भी चीज है. We have developed a romance about industry. What is this romance about industry? Why should I want to research a spinning mill? यार हमारी इंडस्ट्री है क्या? क्या है हमारा रोमांस है इंडस्ट्री का? I think we really need to take a pause and think about it. For example, the government doesn't want to talk to you. Most importantly, I'll raise this question: the government does not want to talk to any universities. मैं सबसे बात कर चुका हूँ, शौकत तरीन, असद उमर, everybody. वो उनके लिए एक बड़ी सिंपल बात है. शनाज will probably speak to this later. उनके लिए बहुत सिंपल बात है. उनके थिंक टैंक्स हैं डोनर्स. HEC के लिए भी डोनर थिंक टैंक है. ब्रिटिश काउंसिल HEC को रन कर रही है. HEC के सारे प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक डिफेंड करते हैं, यही हुकूमत के साथ है. सारी कंसल्टिंग रिपोर्ट्स उनकी करते हैं. वो तो हमसे सवाल भी नहीं पूछना चाहते, आपसे एक बात नहीं पूछना चाहते, और आप लोग अपने आप को सर्ट भी नहीं करते कि वो पूछें. यू हैव नथिंग टू ऑफर. सो दिस इज द बिग इशू दैट वी मस्ट ऑल फेस कि जी हमारे पास ये चीज नहीं है. तो इसके साथ लेट मी गो टू हबीब बुखारी साहब. प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टेल अस योर पॉइंट. जी अस्सलाम वालेकुम नईम साहब. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी. बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया.
और बाकी दोस्तों को भी सलाम। मैं बहुत मुख्तसर सी बात करूंगा क्योंकि आज का आपने जो थीम था वो बेसिकली व्हाई वी हैव नॉट बीन एबल टू प्रोड्यूस ग्रेजुएट्स जो उस लेवल के हों जो कि मुल्क की इकोनॉमी के अंदर प्रॉस्पेरिटी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकें। एंड आई हैव हर्ड सो मेनी पॉइंट्स ऑफ व्यू फ्रॉम ऑल ऑनरेबल वाइस चांसलर्स एंड आल्सो फ्रॉम मैडम शहनाज वजीर, ये पार्ट ऑफ दैट एज वेल। तो मैं थोड़ा सा उसमें as you all are aware of the fact किसी भी एजुकेशन सिस्टम का जो एडिफाइस ऑफ एनी एजुकेशन सिस्टम जो है वो 3 पिलर्स के ऊपर खड़ी हुई है। उसके अंदर सबसे बुनियादी पिलर जो है वो अप्रोप्रिएट मैन पावर का होना है जिसमें ट्रेंड और रेलेवेंट एक्सपर्ट्स मौजूद हों। फिर उसके बाद एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, स्पेस हो, फिजिकल स्पेस हो, एनवायरनमेंट हो, इक्विपमेंट, लाइब्रेरी एंड ऑल दैट। और अभी पोस्ट कोविड के साथ साथ ऑब्वियसली वो इंफ्रास्ट्रक्चर और भी उसमें नई नई डायमेंशंस हमारे पास आ गई हैं। और जो थर्ड वन है इज बेसिकली द इंसेंटिव्स, जिसमें आप लोगों को रिवॉर्ड और पनिश करते हैं। और वो एरिया है जिसमें बेसिकली हमारे यहाँ इनकॉम्पिटेंट इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप जो है वो परहैप्स हैज बीन फेल्ड टू डिलीवर। आपके सामने टीटीएस का फियास्को है जो सामने खड़ा हो गया है और थाउजेंड्स ऑफ पीएचडीज आर अवेलेबल नाउ। वी नो दैट पहले आज से चंद साल पहले कितने थे और अब कितने ऐड हो गए हैं, हाउ मच डेंट दे हैव बीन एबल टू मेक। कईयों को चांस नहीं मिल रहा, बहुत सारे बेरोजगार हैं। फॉरगेट अबाउट द ग्रेजुएट्स व्हिच वी आर प्रोड्यूसिंग, बट लुक एट द नंबर ऑफ पीएचडीज एट द मोमेंट जो अभी बाहर मौजूद है और उनको नौकरियां नहीं मिल रही और हम उसको क्वालिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे ये तो चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं अब सॉल्यूशंस की तरफ, जिस तरह अर्शद साहब ने भी बड़ी अच्छी बातें की और सॉल्यूशंस की तरफ हमें करना चाहिए बात, तो मुख्तसर ये कि हमारे यहाँ existing universities or institutions के अंदर there are hardly any university or institution which is engaged in developing educational and research goals कि हमारी priorities है क्या बुनियादी तौर पे in that particular field, वो basic science का हो, applied science का हो, agriculture, forestry का हो, food securities के issues हो, there's so many other challenges and hardly any other university is willing to basically to get their programs evaluated based on कि भाई उनके प्रोग्राम जो उन्होंने रन किए इतने अरसे से, क्योंकि वो नंबर आपने जिस तरह सब कह रहे हैं क्वालिटी को गेज करने का तरीका क्या है, तो वो जो नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, क्योंकि दिस इज वेयर बेसिकली जो हमारे पैरामीटर्स हैं इन ऑर्डर टू एवेलुएट यूनिवर्सिटीज और ये सारे जो हमारे की इंडिकेटर्स हैं वो इन नंबर्स के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। वो कितने ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू बी, और उसके अनफॉर्चुनेटली वी आर ट्राइंग टू बिकम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, हर चीज करना चाहते हैं। हैव यू थॉट अबाउट बेसिकली बिकमिंग अ स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज, एक्सप्लॉइटिंग देयर टेरिटोरियल जो भी उनकी इस वक्त स्ट्रेंथ्स हैं उसको एक्सप्लॉइट करके यूनिवर्सिटी को आगे लेके जाया जाए। तो ये वो कुछ एरियाज हैं विच वी फील कि अगर हम इसमें स्मॉल और बिग यूनिवर्सिटीज के डाटा के ऊपर बेशक बिल्कुल बात हुई, अब आपके सामने कुछ नोबल लॉरिएट्स डाटा की बेसिस के ऊपर नोबल लॉरिएट्स बन जाते हैं यूनिवर्सिटीज। इंडिया की मिसाल आपने देखी, हेल्थ और एजुकेशन को मिला के ये डाटा आप लेके नोबल लॉरिएट्स आपके बन गए, कंट्रीब्यूटेड इन इकोनॉमी के अंदर। और वो इकोनॉमी बेसिकली हम जब कहते हैं ना जी ओवरऑल कम्युनिटी हेल्थ जो है, व्हेन वी टॉक अबाउट अ कम्युनिटी हेल्थ एंड अ प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमी, वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल हेल्थ। वो इंडिविजुअल हेल्थ उनकी फिजिकल हेल्थ नहीं है, बट इट्स देयर प्रॉस्पेरिटी, इट्स हाउ दे बेसिकली देयर लाइवलीहुड, वो अपने एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के अंदर कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, हाउ दीज थिंग्स और एनवायरनमेंट्स आर बेसिकली इकोसिस्टम हेल्थ और इंडिविजुअल हेल्थ जो मिलकर कम्युनिटी हेल्थ को डेवलप करते हैं, व्हिच आई मीन इज अ मंत्रा ऑफ बेसिकली ये कहते हैं ना जी सस्टेनेबल इकोनॉमी और के हवाले से। तो ये वो एरियाज है जो यूनिवर्सिटीज ने तय करने हैं कि कौन सा इकोसिस्टम उनके लिए आइडियल है और किन एरियाज में उनको ग्रो करना है। इफ यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन दीज एरियाज, तो आई होप इंशाल्लाह जो हमारे फोकस अप्रोच के साथ हमारी फैकल्टी और लीडरशिप और रिसोर्सेज, बेशक उसमें देखें आपके सामने चैलेंजेस हैं, बट वो रिसोर्सेज भी बड़े ऑप्टिमली यूटिलाइज कर पाएंगे। एंड दीज मॉडल्स लाइक लम्स और बल्तिस्तान का है, आई एम सिटिंग इन मरी, आई नो दे हैव ओन स्ट्रेंथ्स, न्यू यूनिवर्सिटी वही कॉलेज से बनी, अपग्रेड हुई, लास्ट ईयर आई ज्वाइंड इट। तो मैं अब इसको वही इसी एरिया के इर्द गिर्द कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी स्ट्रेंथ्स को एक्सप्लॉइट करके ही कम्युनिटी को एंगेज करूँ। जब तक कम्युनिटी को एंगेज नहीं कर सकूंगा, आई प्रॉब्ली वोंट बी एबल टू मेक अ डेंट। तो मुख्तसर ये कि इन चंद पैरामीटर्स के ऊपर अगर यूनिवर्सिटीज आपस में कोलैबोरेट कर लें तो दैट वुड बी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर स्मॉल यूनिवर्सिटीज टू ग्रो। और वो मॉडल्स जिसके अंदर ऑब्वियसली आपने जो कहा कि शायद पुरानी यूनिवर्सिटीज को दुरुस्त करना इतना आसान ना हो जितना नई यूनिवर्सिटीज को अगर आप स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे खड़ा कर सकें और उनको किसी खास और मैं फोकस एरिया में हेल्प और सपोर्ट मिल जाए, तो आई बिलीव कि ये मॉडल्स जो है काफी इफेक्टिव हो सकेंगे। तो थैंक यू वेरी मच नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया।
Dr. Nadeem, may I make a brief comment? I can't hear you. Unmute, Dr. Go Nadeem. ahead, sorry. Go ahead, Shanaz. Go ahead. Thank you. I think, as we are discussing several aspects of what we call the crisis, and I would add, like Dr. Arshad said, the opportunities of the higher education sector today, there's a very fundamental perspective about higher education, which is a matter of concern to me, at least, so I'd like to share it. We are increasingly looking at universities as a manpower producing factory. Often we say, how many jobs do our students get? What is the unemployment rate? And we talk very rarely do we talk about what type of citizen are we producing? What type of young man or young woman are we producing? What is the cultural mindset? Where is that whole other emotional intelligence part and many other socialization processes? तो इस चीज पर मुझे बड़ी शदीद इस वक्त वो है कंसर्न है क्योंकि खास तौर पर जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं स्पेसिफिकली जो टेक्निकल या इंजीनियरिंग फील्ड से आते हैं या साइंस की फील्ड से आते हैं वो हमेशा यही बात करते हैं कि यूनिवर्सिटीज मस्ट बी द इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब क्या ये रोल है यूनिवर्सिटीज का सिर्फ कि वो इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बने? ये रोल नहीं है कि इंट्रिंसिक वैल्यू भी होना चाहिए? क्या ये रोल नहीं है कि मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू डील विद द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द वर्ल्ड? सो आई थिंक देयर इज अ नीड फॉर अ लार्जर डिस्कशन। और हम हमेशा साइंस, टेक्नोलॉजी, मैन पावर, इंजीनियरिंग, जॉब, स्किलिंग पे बात करते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट, यस, बट इट इज नॉट द ओनली थिंग। अब सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज जो है पाकिस्तान में उसकी बहुत कम बात होती है। Campuses are not encouraging design, art, literature, poetry, a whole range of philosophy, historians, anthropologists, archaeological interests, conservation interests, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी तरफ हम इतनी तवज्जो नहीं देते क्योंकि इस किस्म के जॉब्स इतनी आसानी से मिलते नहीं है। ये भी बात सही है। But look at where we are standing today. हम सब कॉलीग्स हैं। क्या हमें जो वाकये हो चुके हैं पाकिस्तान में, सियालकोट का और एक यूनिवर्सिटी में वो स्टूडेंट जो मारा गया और इस तरह के और भी बहुत सारे वाकये हो रहे हैं और जिस किस्म की तंग नजरी इस वक्त फैली हुई है और रिजत पसंदी है और रोशन ख्याली बिल्कुल ही पीछे हट गई है और हम बहुत सारी ऐसी एजेंडाज जो हैं सोशल रिफॉर्मिस्ट एजेंडाज पे हम बात नहीं करते बिकॉज दीज आर वेरी सेंसिटिव एजेंडाज। So I think there are some very basic questions that need to be addressed, and I also feel that we, while we have a lot of concerns and issues, Pakistan में common intellectual capital है, universities produce कर रही हैं। हर university हर चीज outstanding या excellence के level पर नहीं कर सकती, but there are places which we don't officially call centers of excellence, but we all know that there is very high level, internationally competitive, global standard type of intellectual capital that is being formed and created and fostered and nurtured in universities. So ये जो common intellectual capital है, which many countries actually draw on for policy decisions, somehow we are not sufficiently positioned yet. Maybe we can discuss that at some point. That why does our government not reach out to these particularly high intellectual capital centers in universities, departments, people, professors, where they can give input for national policy? They don't reach out. They always say, you're not producing enough skilled manpower. That's not the only job of a university. So I think the discussion needs to be a little larger. And also, if the economy is doing well, and this, some of the reasons that we are not producing so many jobs in the economy is not because the universities aren't producing employable graduates. That's not the equation. These are economic policies. These are political policies. These are policies which need a lot of resetting.
So, the discussion is much more complex than just single indicator discussion. Thank you. I agree with you. It's a very complex discussion, but I think it's a discussion that we should have. I was just thinking about it, the American universities, the way I think about them, how they impacted American development, or the British universities, how they impacted British development. I could say that I could almost trace the advent of colonialism to Oxford and Cambridge. आपके तकरीबन सारे colonial administrators Oxford, Cambridge से आए थे, और पढ़ लिख के वहां से उन्होंने वो जो सीखा उसकी वजह से हमें colonize कर दिया. So the power of education is huge and immense. But the question is, what kind of an education? If you have an education like Pakistani University, where it's brick and mortar that matters, the campuses in Pakistani universities are huge. They are, Qaid-e-Azam University, where I sit, is a campus larger than most campuses in the US. Maybe there are some rural campuses that are larger, but Qaid-e-Azam University is prime property and the best campus in the world. But what has happened? The faculty has made houses for themselves. Punjab University has a beautiful campus laid out over 1,000 acres of Lahore property, which is huge. Again, the faculty has made houses. इन्होंने bureaucrats को follow करके घर बनाने शुरू कर दिया. They're not interested in education. I think we should talk about that too. I think we should have a no holds barred discussion to find out why we are creating this mess. And I invite vice chancellors to participate in that. I'll try and hold this every week. Let's come and talk about it. Let's go to Tariq Banoui. Next time I'll call him too. I'm seeing him this evening. What is wrong here? Why can't we have an open discussion and talk about these things? Ji Zahid Asghar Sahab. Zahid Asghar, Professor Zahid Asghar, बोलिए. चले गए प्रोफेसर साहब. जी मैं बैठा हूं सर. बताइए. मेरी आवाज आ रही है? आ रही है. अच्छा सर, देखिए बात ये है कि हमें अपनी इंडस्ट्रियल इरा एजुकेशन सिस्टम से बाहर आना होगा, जिसमें हम ये कहते हैं कि स्टूडेंट 3 घंटे क्लास में बैठेगा पर वीक, 3 क्रेडिट आवर्स अर्न करने के लिए हमें लर्निंग आउटकम को फिक्स करना होगा. अगर हमारी लर्निंग आउटकम फिक्स हो जाएगी तो इररिस्पेक्टिव कि वो स्टूडेंट कहाँ बैठा है, मुझे इससे कंसर्न नहीं रहेगा. मैं इस वक्त बैनर्जी दुफलो लोगों से अगर माइक्रो मास्टर्स के MIT से कोर्स ले रहा हूँ तो वाई आई कैन नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी कि मैं एक लम्स का बंदा जो MBA एग्जीक्यूटिव को पढ़ा रहा है, मेरे से वो कोई जो है 2000, 5000, 7000 रुपया ले और मेरी लर्निंग आउटकम अगर फिक्स हो जाए तो व्हाई शुड आई नॉट हैव द राइट कि मैं अपनी अपस्किलिंग और रीस्किलिंग कर लूं. मैं मैडम बहुत मोहतरम है हम सब के लिए, लेकिन ये जो बात थी कि एवरी स्टूडेंट हैज नॉट द राइट टू गो टू यूनिवर्सिटी, ये एक इंडस्ट्रियल इरा की बातें थी जब एजुकेशन कॉस्टली थी. इस वक्त डिजिटल टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन हमारे लिए एक्सेसिबल बना दी है. और अगर हमने एजुकेशन को एज बिजनेस मॉडल ना लिया, क्योंकि आप बिल गेट इसको रन कर रहा है, इस वक्त गूगल वाले रन कर रहे हैं, इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट वाले रन कर रहे हैं, तो बात यह है कि जब तक हम इसको एक्सेसिबल टू ऑल नहीं करते, मेरा नहीं ख्याल कि हम जो है वो अपना जो पर्पस है वो सर्व कर रहे हैं. लाइक न्यूज़पेपर इंडस्ट्री, लाइक फिल्म इंडस्ट्री, लाइक म्यूजिक इंडस्ट्री, ये तीनों जो है वो ऑब्सोलीट हो गई. उनको नए मॉडल में आना पड़ा क्योंकि वो समझते थे एडवर्टीजमेंट से हमारा बिजनेस आ रहा है. तो मेरा ख्याल है कि हमें जो है वो इस चीज को देखना होगा कि जी हमारे पास जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पोस्ट पेंडेमिक में एक अपॉर्चुनिटी मिली है. हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से हूँ, हम सारे प्री पेंडेमिक पे जाना की कोशिश कर रहे हैं. तो जब तक हम अपना ये मॉडल चेंज नहीं करते, और इस पे मेरी सारे जो वर्दी वाइस चांसलर्स हैं उन सब से ये रिक्वेस्ट होगी कि जी व्हाई नॉट थिंक बोल्ड, व्हाई वी आर थिंकिंग कि जी अच्छा कल को जब जो है वो कोर्सेरा, EDX, MIT, हार्वर्ड मुझे एक डिग्री देगा और जो है वो उसके बाद एंड फाइनली व्हाई आई कैन नॉट हैव अ पार्ट टाइम डिग्री. तो ये वाइस चांसलर्स के सोचने की बातें हैं. ये 1960 जो 150 साल लगा उस एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज करने में, मेरा ख्याल है उससे हम बाहर आ जाएं. ये ग्रेड A to F जो एक्रीडेशन है स्टूडेंट्स की और क्रेडिट आवर्स कितने अर्न किए हैं, अगर हम इस पे रहेंगे तो यही क्वालिटी आएगी. वी हैव टू थिंक बोल्ड. अब सॉल्यूशंस क्या है? फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ. Thank you, sir. Solution ये है. I think you're absolutely competent. You're absolutely right. We need to change the business model. ये जो brick and mortar based model है कि यूनिवर्सिटी बना लो, वाइस चांसलर का घर बना लो, प्रोफेसरों का घर बना लो, this is an obsolete model.
एंड इंडस्ट्री के पीछे पीछे भागो, ये बिल्कुल ऑब्सोलीट मॉडल है. Learning is the important part, but which we vice chancellors, we the universities have forgotten. Ji Fateh Mari Saab, back to you. Sir, thank you very much. Dr. Rashid साहब ने जो बात की वो केस स्टडी विद गिलगित-बल्तिस्तान, मेरा ख्याल है वो एक तरीका है कि हम यूनिवर्सिटीज एक दूसरे की हैंड होल्डिंग करें और फिर कहते हैं कि सलाम घोड़े सवार पे फर्ज है. तो जो बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, खासतौर पे पाइड है, लम्स है और ज़ेबिस्ट है, IBA कराची है, नस्ट है, जो भी, तो वो दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन करें. एक हमारी ये स्ट्रेंथ है और देन इट्स टू वे, इट्स म्यूचुअली बेनिफिशियल. हमारे पास जो सीड साइंसेज है, जो एक्सपर्टी हमारे पास होगी शायद वो दूसरों के पास नहीं होगी. इसी तरह से एनिमल साइंसेज की जो एक्सपर्टी एनिमल ब्रीड्स की होगी वो हमारे पास है, दूसरों के पास नहीं होगी. तो इसी तरह से जो हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो एक could be one of the way forward. Second, I fully support the viewpoint of Madam Shahnaz के यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है, उसकी जो और इकोनॉमी वाइड बेनिफिट्स हैं, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड अदर बेनिफिट्स, वो भी हमें ध्यान में रखने चाहिए. सिर्फ हम स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटियां नहीं है, यूनिवर्सिटियां इंटेलेक्चुअल्स या इस तरह के लोग भी प्रोड्यूस करती हैं. सोशल साइंसेज बिल्कुल एक ऐसा एरिया है जिसको हमें, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, उसको भी जरूर देखना चाहिए. थैंक यू सर. Nokia 5. Nokia 5 कौन है जी? Please introduce yourself and quickly. जी Nokia 5. Can you hear me, Nadeem? This is Nadia. Nadia Tahir. Nadia, I can hear you, but I really find you speaking on behalf of Nokia 5 a bit disturbing. नहीं, मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा नाम आ जाए, लेकिन वो शायद फोन नहीं मान रहा था. My point is आप Nokia 5 अभी रखी बैठी हैं, तो आपकी बात क्या सुनी? Nokia 5 अभी तक रखी बैठी है. हाँ जी, बिल्कुल. I have to change. This is an obsolete model. Won't allow me. अच्छा, I am saying few things जो मेरे दिमाग में आ रही थी सुनते वक्त. एक तो क्राइसिस इन हायर एजुकेशन की बात होनी थी. मुझे तो लगता है ये परपेचुअल स्टेट ऑफ अफेयर है. हम इस हालत में सदियों से चल रहे हैं और चलते जा रहे हैं, और अब तो क्राइसिस की बात होनी चाहिए. एक क्राइसिस से आगे निकल गई. मेरे लिए जो सबसे बड़ा क्राइसिस है, एज आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व हायर एजुकेशन कमीशन और क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी को, प्रोग्राम बंद कर देना, क्वालिटी नहीं है, फैकल्टी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इज समथिंग विच वी ऑलवेज डू. लेकिन मसला इससे बड़ा है कि टीचर्स एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे आना चाहते हैं. दे ऑल वांट टू सर्व रजिस्ट्रार, दे ऑल वांट टू सर्व और डायरेक्टर ऑरेक, डायरेक्टर QECs, लेकिन पढ़ाने का काम शायद बंद हो चुका है. तो इस पे आप गौर करें, ये सबसे बड़ा मसला है. और मुझे सबसे ज्यादा परेशानी एज एन एकेडमिक, एज ए टीचर, एज ए फैकल्टी मेंबर इस बात पे होती है जब हम कहते हैं कि करिकुलम HEC ने सेट करके दिया है, हम सब उस पे करते हैं. सेमेस्टर सिस्टम की स्पिरिट ये थी कि हमने अपना करिकुलम, अपने लर्निंग आउटकम्स सेट करने हैं और उसके मुताबिक हमने पढ़ाना है. लास्टली यूनिवर्सिटीज का कंसोर्शियम हम नहीं बना सके कि जो यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ जिस सब्जेक्ट में है वहां पे हम स्टूडेंट्स को भेजें कि वो वहां पढ़ लें. आई हैव सीन वेरियस कंसोर्शियम्स इन वेरियस कंट्रीज कि जो यूनिवर्सिटी समझती हैं कि पेंसिल्वेनिया में जाके आप पढ़ना चाहते हैं या हेवरफुड में जाके पढ़ना चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ लें, डजंट मैटर. हम अपनी यूनिवर्सिटीज को क्यों नहीं खोल रहे? हम स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं कर रहे कि अगर एक कोर्स पाइड अच्छा पढ़ाता है तो वहां से पढ़ लें, दूसरा अगर लम्स अच्छा पढ़ा रहा है तो वहां से पढ़ लें. हम इस किस्म की जॉइंट कोलैबोरेशन नहीं करते. एंड कोड ऑफ ऑनर हमारी यूनिवर्सिटीज का कोई नहीं है. हमें नहीं पता, इंटेग्रिटी हम बात सारे करते हैं, लेकिन हम क्यों एक कोड ऑफ ऑनर नहीं बनाते कोड ऑफ स्किल्स के साथ कि मेरा ग्रेजुएट at the end of the day will have these skills as well as these ethics and integrity positions. तो मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ तमाम वाइस चांसलर से कि आप सब ये सोचिए कि एक क्वालिटी पॉलिसी होनी चाहिए यूनिवर्सिटी की, अपनी क्वालिटी को डिफाइन करें और इसके साथ कोड ऑफ ऑनर बनाएं और यूनिवर्सिटीज को खोलें ताकि हम एक कंसोर्शियम के साथ मिलकर काम कर सकें. थैंक यू वेरी मच.
Thank you जी बोलिए गुलाम मुस्तफा साहब, introduce yourself and speak quickly. बैठिए. Assalamu alaikum. I'm Ghulam Mustafa from PIDE. मैं रिसर्च फेलो, और ये जो टॉपिक जिस पे आप लोग बात कर रहे हैं, मतलब इट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, और रिसेंट और करंटली मैं इसके ऊपर काम भी कर रहा हूँ. एक P&R जो पाइड का मैगजीन है, वो मैं इसी पे कर रहा हूँ, जिसमें क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन है, रिसर्च के ऊपर है. तो अभी तक जितनी मैंने डिस्कशन सुनी है, या जो मैंने मुख्तलिफ इस दौरान मैंने लिटरेचर भी पढ़ा है, मुख्तलिफ वेबिनार भी सुने हैं, तो और एक मेरी अपनी भी जो एक ऑब्जर्वेशन है, प्रॉब्लम मेरे ख्याल के मुताबिक जो अक्सर कहा जाता है फाइनेंस का मसला है, बजट नहीं है वगैरह. ठीक है, बजट का मसला है, वो सारी चीजें हैं, वो मसले तो वो रहेंगे, लेकिन असल मसला बिहेवियर का है. मेरे ख्याल के मुताबिक हम लोग एक, सबको सोल्यूशन का पता है, एवरीवन नोज द सोल्यूशन है, कि अभी भी देखें यहाँ पे हमारे जितने वर्दी वीसीज हैं, या हमारे बकिया जितने भी यहाँ पे और पार्टिसिपेंट्स हैं, हर एक ने मुख्तलिफ सोल्यूशन भी सुजेस्ट किए. इट मीन्स कि वी नो द सॉल्यूशंस, हमें सॉल्यूशंस का पता है, लेकिन हम उस सॉल्यूशन की तरफ जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारा एज ए सोसाइटी या हमारा एक बिहेवियर ही और है. देखिए, हम स्टूडेंट की बात करते हैं, बड़ा जी गार्बेज पैदा हो रहा है जी. प्रॉब्लम ये है कि what we produce depends on what we teach, and what we teach depends on what we induct, और what we induct it depends on who is inducting. तो ये एक पूरी चेन है, यहाँ पे ही एक, यहाँ से शुरू हो जाता है मसला. मेरे ख्याल के मुताबिक जितना मैंने अभी देखा है, हमारा एक ये बिहेवियर का मसला है. अगर हम देखें आज हमारे टीचर्स हैं, अगर हम देखें, वही पुराने, अपडेट नहीं करना खुद को, कोई नई बुक, वही अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, हमने 10 साल पहले रोमर की बुक पढ़ी थी, अभी भी वही रोमर की बुक चल रही है. उससे पहले जो हमारे टीचर्स हैं वो बताते हैं हमने भी रोमर की बुक पढ़ी थी. तो कहने का मतलब है कि हम लोग, एक बार अमेरिका से मैं पढ़ के आ गया, जो मुझे वहां पे किसी ने पढ़ा दिया, अब मैंने चलते रहना, मैं 70 साल का भी हो जाऊंगा तो मैं वही पढ़ाता चला जाऊंगा, वही पढ़ाता चला जाऊंगा. दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जिसको हम मतलब के बहुत गौर करने की जरूरत है, कि टीचर्स है, अब वो 4 जगह पे पढ़ा रहे होते हैं, विजिटिंग पे भी पढ़ा रहे होते हैं, और अपनी जगह पे यहाँ पे तो बाज यूनिवर्सिटी के अंदर इंसेंटिव ऐसे कर दिया कि वो मॉर्निंग में क्या करते हैं, इधर से कोई हम जैसे जो जूनियर से बंदे होते हैं, इनको उठा के इधर उधर आके वो आके विजिटिंग पे कोर्स पढ़ा दो. हर जगह पे देखो विजिटिंग विजिटिंग. अगर हम अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अपने बच्चों के, उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं बिल्ड कर सकते, तो उनको बेशक मेरे ख्याल के मुताबिक हम 5 भी PhD करा दे, उनके अंदर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी उनकी नहीं, उनके अंदर पैदा हो सकती. तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हमारा जो है वो बिहेवियर का है, और कोई प्रॉब्लम नहीं. फाइनेंस का भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि फाइनेंस का एक मसला जी पैसे नहीं है, HEC पैसे नहीं देते, ये नहीं देते. देखें, जैसे हमारे VC साहब ने, नदीमुल हक साहब ने भी बात की, कायदे आजम के अंदर देखें कॉलोनीज बन रही हैं. आप जाके जरा घर देखें, आपको लगेगा कि यार ये टीचरों के तो घर ही नहीं, किसी ब्यूरोक्रेट्स के घर है. इसी तरह का बाकी यूनिवर्सिटीज के अंदर चला जाए, बहुत सारी जगह पे देखें, और हमारा जो एक बिहेवियर है वो ओवरऑल ब्यूरोक्रेटिक है. तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो है बिहेवियर का इशू है, अदरवाइज और सॉल्यूशंस भी है, और हम सब जानते भी हैं, और हम करना नहीं चाहते. ये मेरा कमेंट है. थैंक यू. जी, कैन यू गाइस हियर मी? जी बिल्कुल, we heard you. बिल्कुल जी बताइए डॉक्टर वाहिद बख्श. I have to now close this. जी डॉक्टर वाहिद बख्श, quickly. Thank you, Dr. Nadeem Malak. Dr. Wahid Baksh Mangro, Assistant Professor in Public Policy from Iran University, Jamshoro. Actually, I did complete my PhD recently. जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट भी है हायर एजुकेशन पॉलिसी रिसर्च एरिया में, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने ऑब्जर्व किया है व्हाइल आई वाज ट्रैवलिंग टू US एंड एडवांस कंट्री लाइक जापान, तो उसमें जो मेजर प्रॉब्लम मैंने ऑब्जर्व की पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, सवाए 2-3 ऐसे डिसिप्लिन एरिया हैं जहाँ पे हमने देखा है कि हमारी रिसर्च कम्युनिटी जो है, जो मेनली यूनिवर्सिटीज़ में है, दे आर कोलैबोरेटिंग, और उनकी जो एसोसिएशन है, सिर्फ जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का मैं एग्जांपल दूंगा, दे आर मोर इफेक्टिव एंड रेगुलरली दे आर conducting their annual conferences and interacting with each other and sharing their research. बट ये चीज़ जो है वो हमें दूसरी डिसिप्लिन एरिया में जो है ना वो हमें नहीं मिलती.
जो एक्चुअली स्पेशली जो मैं साइंस की बात करूंगा, साइंस और मेडिकल साइंस की, इंजीनियरिंग साइंस की, इंजीनियरिंग साइड पे, तो उस साइड पे हमारे यहाँ ये लैकिंग करता है कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नहीं है अमंग द रिसर्च कम्युनिटी, वेरियस यूनिवर्सिटी। हम जो इसमें जो हमारा जो कोलैबोरेशन नहीं बनता, इंटरेक्शन नहीं जो रिसर्च कम्युनिटी के दरमियान होते हैं, और जो हमारा रिसर्च है, फॉर एग्जांपल हमें जो क्वालिटी रिसर्च जर्नल्स की बात करें तो हार्डली पाकिस्तान के सवाए कुछ जर्नल के, बाकी जो यूनिवर्सिटीज जो पब्लिश कर रही हैं रिसर्च जर्नल, वो सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो वो कर रही हैं। तो हमें फॉर एग्जांपल हमारी जो डिफरेंट सोसाइटीज हैं, साइंस सोसाइटीज, एसोसिएशंस जो हैं, वो आपस में कोलैबोरेट मॉडल जो है हमारा वो होना चाहिए, ना कि हम डिपार्टमेंट लेवल और सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी लेवल तक जो है सिर्फ हम आपस में जो है कोलैबोरेट कर रहे होते हैं। तो ये चीज जो है वो मैंने ऑब्जर्व की है 2-3 फील्ड्स में, मगर ये चीज जो है वो दूसरी साइंस सोसाइटीज वगैरह के हिसाब से वो नहीं है। जो 1970s और 1980s में जब ये चीजें होती थी, उस वक्त जो पाकिस्तान के जो हाईएस्ट पोजीशन जो थी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह, वो इनवाइटेड होते थे इस सोसाइटीज में, और उनकी जो है वो फिर पॉलिसीज की डेलीगेशंस वगैरह और पॉलिसीज को फोकस करना वहां होता। मगर ये चीज जो है वो हम अब जो हमारे यहाँ लास्ट 3 डिकेड्स में ये चीज जो है वो कम हो गई है। थैंक यू वेरी मच। फॉर्मर वाइस चांसलर ताहिर इजाजी साहब, क्विकली। इजाजी साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू डिस्कस ऑन मैडम शहनाज वजीर ने पॉइंट रेज किया कि यूनिवर्सिटीज जो है दे आर सपोज्ड टू बी क्रिएटिंग द सोसाइटी, और जो वैल्यूज है सोसाइटीज का वो करना चाहिए। लेकिन आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट के वैल्यूज तो स्कूल में बनती हैं, और स्कूल का टीचर जो है वो मैंने कभी 45 इयर्स में मैंने नहीं देखा कि स्कूल का टीचर यूनिवर्सिटी में आए। वो यूनिवर्सिटी आता ही नहीं है, वो पढ़ाता है। इसी तरीके से सोशल वैल्यूज की जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स, दे एक्चुअली कम इनटू द गवर्नमेंट थ्रू CSS एग्जाम, लेकिन यूनिवर्सिटी से नहीं गुजरते। वो BA करके आते हैं, यूनिवर्सिटी उनका एक पार्ट ऑफ नहीं है। तो आपका बेसिक जो वो है सोशल वैल्यूज बनाने वाला जो सिस्टम है, वो सिस्टम हायर एजुकेशन से बाहर है। तो पहली बात तो ये है कि हायर एजुकेशन रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत कुछ देता है, लेकिन उस रिसर्च को पॉलिसी तक ले जाने का कोई तरीकाकार नहीं है। और वो जो गैप है वो पिछले आपके 72-75 साल से चल रहा है, वो गैप एज इट इज जा रहा है। कमिंग डाउन टू बेसिकली कि यूनिवर्सिटी जो है वो उसके का फंक्शन क्या है, रोल क्या है। और आप कई बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि जी फैक्ट्रीज हैं, आप भी ये कह रही थी कि फैक्ट्रीज हैं, लेकिन देखिए यूनिवर्सिटी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, ऐसी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे जो फर्दर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके, लोअर लेवल की एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके। हायर एजुकेशन का जो ये मकसद है, ये इस हिसाब से दुनिया भर में चलता है और हमारे यहाँ भी ये है। लेकिन क्वेश्चन फिर आ जाता है कि क्या वो क्वालिटी हम दे रहे हैं जिससे कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, वो एक्चुअली बिग क्वेश्चन है, जिसके ऊपर हमने मेरे ख्याल में डिटेल में डिस्कस करने वाली चीज़ है। और वो ऐसे सब्जेक्ट वाइज है, कौन से आप इकोनॉमिस्ट ऐसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन से मैनेजर ऐसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन से साइकोलॉजिस्ट ऐसे प्रोड्यूस कर रहे हैं जो आगे सोसाइटी में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते। द लास्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू एम्फसाइज इज के हमारे जो है ना हायर एजुकेशन और इंजीनियरिंग काउंसिल, ये बेसिकली जो आपको फोकस करते हैं ना कि जी आपने अटेंडेंस दे दें, आप बता दें कितने स्टूडेंट्स थे, कितने क्लास में है, ये वो है जो कि रिजल्ट बेस्ड नहीं है, ये इनपुट बेस्ड है। और जिस तरह इंजीनियरिंग काउंसिल कहती है कि आउटपुट बेस्ड आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, वो असेसमेंट करते वक्त इनपुट बेस्ड करते हैं, और इस वजह से आपका सिस्टम इम्प्रूव नहीं करता। अभी जहाँ तक हमारा टीचिंग का मेथड है ना, वो बेसिकली हमने जो पहले ले लिया सेमेस्टर सिस्टम अमेरिका से ले लिया, उसको हमने मर्ज करके कोई आधा ब्रिटिश सिस्टम आधा पाकिस्तानी सिस्टम उसमें बहुत ज़्यादा मिक्सअप कर दिया है। सेमेस्टर सिस्टम का जो ओपननेस थी वो हम नहीं अडॉप्ट कर सके हैं अभी तक। और जो टीचिंग मेथड्स हैं उसमें ड्रामेटिक चेंज आ गया। अभी देखिए कोविड के दौरान कई नई चीज़ें आई,
कि किस तरह ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं। इस वक्त आपकी यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज के पैरेलल MIT और हार्वर्ड और बहुत सी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज वही डिग्रियां बड़े सस्ते पैसों में दे रही हैं। क्वेश्चन बेसिकली ये है, वी हैव टू रियली फोकस कि हमारी टीचिंग मेथड में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट आए। और जिस तरह अभी गुलाम मुस्तफा भी बता रहे थे कि भाई वो टीचर जो है विजिटिंग में आके पढ़ा के चला जाता है, भाई अगर मेथड ठीक हो तो फिर आपकी आउटपुट सही होगी। अभी प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मेथड ठीक न होने की वजह से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो रट्टा लगा के आ रहे हैं। इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे वो कुछ चीज़ों को याद करके आके रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, उनको समझ नहीं आती, वो फिर प्रोडक्टिविटी पैदा नहीं करते सोसाइटी के अंदर। वो अगर वो प्रोडक्टिविटी नहीं पैदा कर सकते, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकते, तो वो फिर पर्पस जो है यूनिवर्सिटीज का वो डाई आउट हो जाता है। तो इसके ऊपर सेपरेट डिस्कशन की बहुत जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। Ji Shenaz, can I come to you to sum up the discussion, because I think it's time we closed it. I will urge everybody, we will try and do this every week. Let's treat this as a crisis. Let's come together. Let's try and get together and form a Vice Chancellors Forum. And let's try and put this together. Ki yaar, ye problem kya hai? Let's face it together. Let's tell the government that there should be a moratorium in new universities. पंजाब की जो 12 नई यूनिवर्सिटी बन रही हैं, that's bullshit, that's waste of money. आप कहते हैं पैसे नहीं, we spend more money on universities. Ataur Rahman is building a 100 billion rupee university. Punjab is spending another 100 billion in universities. तो फिर कहाँ से हमारे पास आएंगे पैसे? जी सिनाद भी बताइए. Anji, thank you very much, Dr. Nadeem. I think we're already 1 hour and 20 minutes or 40 minutes beyond. आज की जो डिस्कशन है उसमें से कई फर्क एरियाज, कुछ डिफरेंट स्ट्रेन्स निकले हैं, different issues. Maybe what would be useful for us, I don't think it's much value for me to respond to a lot of the colleagues, because I agree with many views. I have expressed the same concerns, but I do think a longer discussion is required. So if there can be some way that this discussion group can become useful and allow different universities to take from the discussion some of the things that they can do. As Dr. Asher said, everything doesn't have to wait for HEC's direction and policy, etc. Universities do have a lot of opportunities, a lot of reserves, resources that reside within their own faculty and their students to do many things. So I was thinking that maybe there can be some sort of a selection of certain types of issues and themes, and then every week we can have a discussion on them, and also see how we can address the issues, relationships, I would say. That is to say, society's relationship with universities and universities' relationship with society. And I'm using the broader frame. It's not just values. It's many, many other things also that universities need to think about. How can they create an environment where diversity and freedom of thought and freedom of expression and so forth can happen? And as well as what is the relationship with government in terms of producing intellectual value for policy purposes. So I think that perhaps Dr. Nadeem, if you could maybe communicate with a larger group and put out some topics for the next couple of weeks, that would be useful. I think you're absolutely right. We will take up the challenge. We will put out some stuff, and we will invite vice chancellors regularly to talk about this. I've got a number of themes today that we need to think about. I think what Arshad Saab said about collaboration. I think we should begin to think about how universities collaborate with each other. The issue of silos has to be confronted. I have never seen such silos as in Pakistan. I mean, everywhere that I've seen, there were universities, even in Sri Lanka, universities were talking to each other. Even in Egypt, universities were talking to each other. Even in Central Asian countries, people are talking to each other. Why are our universities silos? We should talk about that. The second issue, resources. People talk about resources, but if you're going to waste all our money on making new universities, where are resources going to come from? And in resources, I keep hearing about money, but I seldom hear about professors. Where are your champions? I mean, in the American universities in 1890, I wrote about this a long time ago. In 1890, when the University of Chicago was formed and Clark University were formed,
they were competing for human resource. They had created a market for professors. In 1815, when when Thomas Jefferson made the University of Virginia, he sent a ship to Oxford and Cambridge to import professors. Where are our professors? Where are champions? We don't have any champions. Where do you, the way I look at it is a VC is a manager of a cricket team. He should have Babar Azams. Where are our Babar Azams? We don't think of human resource as a resource. We think only of money as a resource. Secondly, we are all into a numbers game. We're all into a numbers game, and we are all into a game of, which is the way the donors look at things. Donors look at things as numbers and outputs, and we all think of data as numbers. To me, I played with numbers all my life. I'm an econometrician, a statistician by training. I think we overdo numbers. We don't think of concepts. We are on a learning journey, and we have to make learning. We don't have to make numbers. Are we making a learning? That's something that we have to think about very clearly. What is the capacity of our universities? We have to revisit the term empirical. Then second, and lastly, second last, I would say, autonomy is a major issue. Are we autonomous? Are we not autonomous? I would even argue there are boards. For example, all public sector universities follow one law, which says that on every board there should be secretaries. That is the kiss of death. Why can't we have trustees or board members who are interested? Community board members who are interested are not a part of the university. And unfortunately, it's bureaucrats, it's nominee of the court, nominee of parliament, which is what a strange way to run a university. We have to talk about it too. I think our legal system, we have to talk about our legal system. Our university legal system is very wrong. Why should we are still sitting with medieval institutions like syndicates and senates? Why should we have syndicates and senates? Why don't we just have a board for a university? Why do we have board of studies and so many things that are defined in the law, which are absolutely crazy? So yes, we will take all these things up. Thank you very much, folks. We will broaden this discussion, deepen this discussion, and we will try and learn a lot more, but it will depend on the Vice Chancellor's time and availability. If the Vice Chancellors are not interested, that is also something that you should take as a measure. If the Vice Chancellors are not interested, then I'm sorry. We can't have a university because the Vice Chancellors must be interested too. Vice Chancellors in the rest of the world, when they call a meeting like this, there is no Vice Chancellors absent. Let's see what interest the Vice Chancellors will take as we develop this discussion. Thank you very much, folks. All the best to you. Khuda Hafiz. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Khuda Hafiz.